Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile. Ancient alchemy truly is fascinating. How can I help you? Ancient alchemy truly is fascinating. The neighboring nation of Liyue. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. Add Astro. Thank you for complete. Add Astro. Settle down! Illusion shattered! Shine down! Torn to oblivion! Remove all obstacles. Bow your head.
Into the wind. Settle down! One with nature. Into the wind. Shine down. The wind knows me. Bow your head. There is no escape. Into the wind. Settle down! Showing you praise! Inazuma shines eternal. Illusion shattered. Silence!
down! There is no escape. Wind strider. Clouds high. The birds call. The tides beckon. An oversight on my part. Bow your head. Illusion shattered. Settle down! Wind strider. As one with wind and cloud. Be sanctified. Silence! Justice is blindsided. Shine down. One with nature. The tides beckon.
Illusion shattered. How brilliant! Bow your head. There is no escape. Settle down. Wind strike. Silence. Illusion shattered. Strike alone! Settle down. Let the mighty be humbled. Bow your head. Wind strike. हेलो 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 आवाज़ आ रही है तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैं आऊँ क्या वालेकुम अस्सलाम वालेकुम चैट नहीं सो रही थी मेरे को मे भी ये दिक्कत हो गई थर्ड वाला कनेक्ट लोकल से कैसे हो बढ़िया आप बताओ मैं भी ठीक हूँ
अच्छी बात है। मोरा मिल रहा है भाई। हाइड्रो स्लाइम और किसी लाइक कर दो यार, इसने भी लाइक नहीं करा। लाइक मार दो एक। There is no escape. Now you shall perish. Fallen leaves, adorn my night! The tides beckon. Illusion shattered. Strike a pose. Torn to oblivion. Settle down. Be sanctified. ऐसे नहीं होगा। मेरे अकाउंट में न्यूली अंकल पुल कर दो ना। ओके 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 कर देंगे कर देंगे। आना आप भी स्ट्रीम पे, उस दिन करते हैं। पर डे करना है ना। वैसे गारंटेड है ना आपका? गारंटेड। गारंटेड है ना आपका? ये बता दो। हाँ 50+ फुल है, सेव कर लिया हूँ मैं। गारंटेड है हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। गारंटेड है फिर आराम से निकल जाना चाहिए। गारंटेड है तो आराम। I see everything. The Temple of Wisdom. Our bond is strong. Shine down. Now you shall perish. Know my sword. Let me weave you a verse. Stand with me. Lightning, here I go. Roll, roll, roll. Yeah.
strong! Out of my way! Yeah, yeah! Yeah! This way, Karina! Yeah! 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 Stand with me! Huh? Let me weave you a verse. Lightning purified! Yeah! It's a minute to memory! Yeah! 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 This way, Karina! Our bond is strong. Witness the power of Gohua. Inazuma shines eternal. There is no escape. Dissipate. Yeah, roll, roll, roll. Yeah. 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 Another test subject. Let the show
Freeze! There's no end to this. No escape! Oh, so sorry. Dodge this! I'll protect us. Freeze! Adventure time! Everybody stand back! Let's light it up! Cool it! Freeze! Dodge this! There's no end to this. Let the show begin. Freeze! Huh? How did that come? How? What's the hurry?
What's the hurry? I will protect you. I'll catch up. Leave it all to me. I'll catch up. Steady as stone. Leave it all to me. I'll catch up. I must leave no stone unturned. Someone needs assistance. Don't get frostbite. Dodge this. Ha! Ha! Ah! Come on, we can do it. Hey. I'll catch up. Let's dance. If at first you don't succeed. I'll catch up. Steady as stone.
Got him cornered. I must leave no stone unturned. Someone needs assistance. I'll catch up. Leave it all to me. Off we go. Off we go. Adventure time. Off we go. Oh, ow! Where did that come from? Leave it to me. All of it. Whatever it is. What exactly is it? I didn't quite catch your request.
catch up. Huh. Steady as stone. Cool it. Ha! Ah! Ha! 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 Yeah. Ha! 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 Fascinating. What's the hurry? What? How fortunate. Quite the find.
What's the hurry? Tja, tja. Tja. Na! Ja! Leave it all to me. As a dutiful maid would. Whenever you need me, I'll be there.
good night shoe. I'll catch up. I'll catch up. What's the hurry? Someone needs assistance. All in a day's work. I'll catch up. All in a day's work. I'll catch up.
What's the hurry? Don't. This moment will be Oh, how fortunate. This moment will be what's the hurry? Fat. Hey, don't die on me. Don't. Ready when you are. Fascinating. What's the hurry? What's the hurry? Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all.
Seems all the other knights already have their hands full. Let's fly! Dodge this! Oh, so sorry. Leave it all to Locked me. on! Time to clean up. Open fire! Yeah. Someone needs assistance. I must leave no stone unturned. Someone needs assistance. As a good night cheer. Steady as stone. Whenever you need me, I'll be there.
What's the hurry? You'll get frostbite. Fascinating. Quite the find. Catch the wind. Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all.
What's the hurry? Another test subject. Fry! Quite the find. Quite the find. What's the hurry? What's the hurry? Cool it!
Seems all the other knights already have their hands full. Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. Seems all the other knights already have their hands full. Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all.
The world remains. Another chance to learn from you! This one's got your name on it! Hey there! Ah. Hey there! Nah. Ha-ha. Nah. Hiya! Fire! Well, let the world collide! Everybody stand back! Get back! Here goes! This one's got your name on it! This one's got your name on it! Now, tap! Ha! What? Coming at you! Ha-ha! Hiya!
adventure time. Let's light it up. एक्चुअली बताऊं तो मेरे पास माइक है, मतलब हेडफोन का माइक है, लेकिन घर में क्या बैकग्राउंड में शोर होता रहता है, इसलिए माइक ऑन नहीं करता हूं मैं। अब आवाज आई मेरी? आ गई होगी अच्छी तरीके से। Coming at ya. भाई मिस कर दिया। Hey there. हाँ आ गई, हाँ आ गई ना, वही कह रहा हूँ। Proper send up. कुछ रीजन है जिसकी वजह से माइक बंद करना पड़ता है। Teamwork is dreamwork. Straight down. Let her rip. Umbrella warfare, I guess. वाह, This one's got your name on it. क्रेट डैमेज देने के बाद भी Ah. इसको अटैक ही देना पड़ेगा बार बार। Hiya. Watch out. क्रेट डैमेज से इसका कुछ नहीं होना। ब्लू ग्रेव स्टोन ही सही है इसके लिए। जीवो पता गॉबलेट भी क्या कर रहे हो? नाविया का शोकेश नहीं, बस बिल्ड चेक कर रहा था, क्योंकि कुछ हाल ही फिलहाल में इसको बिल्ड कराया मैंने, मतलब इसका सिग्नेचर सेट फार्म कराया, बस वही चेक कर रहा था मैं। इसको क्रिएट रेट और देना पड़ेगा मेरे ख्याल से, 72 पे काम नहीं चल रहा है मेरा। क्रिएट तो कर रही है लेकिन 3.5 लाख का मार रही है, मेरे को चाहिए 5-6 लाख का, तब ना मजा आएगा। I do love. 3.5 लाख में मजा नहीं आता मेरे को। कितनी क्यूट लगती है यार कचीना, लाइक अ कैट या डॉग। कैट कैट ज्यादा लगती है, बिल्ली। 3.5 लाख अच्छा डैमेज है। आप पता है मेरे को बच्चा है, पर मेरे को सर्टिफाई नहीं कर रहे, क्या बोल सकते हैं, संतुष्टि नहीं मिलती है मेरे को। इतना मेहनत करा है भाई, कम से कम 5 लाख का तो मारे। ये तो पूरा ही मार देंगे। अबे एनर्जी चाहिए मेरे को, पूरा नहीं मारूं इसको। भाई कचीना, Nothing. I can walk it off. कचीना ही मर गई। वाह, इसको लेवल अप नहीं करा मैंने, सिर्फ इसका आर्टिफैक्ट का बफ लेने के लिए करा था, ये 4 पीस का बफ लेने के लिए। ऊपर वाला चैट नहीं पड़ा, कौन सा वाला? अभी बैनर किसको पुल करोगे? अच्छा, नेक्स्ट करेक्टर। हाँ वही तो, नेक्स्ट करेक्टर तो मैं C1 न्यूब्लेड के लिए जाऊंगा। जीत गया C1 न्यूब्लेड के लिए तो अच्छा है, नहीं जीता तो माविका गारंटेड हो जाएगी मेरी। पुल्स भी अच्छे खासे हैं मेरे पास, तो मैं तो काम ही बन जाएगा मेरा। 40 की पिटी है मेरी। और क्या चाहिए जिंदगी में? 40 की पिटी है, 100 110 पुल हैं, 108 पुल हैं, या 8 होंगे, तो वही मिला करके हिसाब हिसाब किताब जोड़ के मेरे को अभी आई थिंक 30 पुल और जमा करने हैं, मेरा काम हो जाएगा। न्यूब्लेट अगर 50-50 जीत गया मैं, न्यूब्लेट क्यों? माविका निकालो,
वो पुराना हो गया। अरे न्यूलेट C1 मेरे को चाहिए ना, इंटरप्शन बहुत होता है, मेरे पास सील्डर कोई अच्छा है नहीं, इसलिए C1 के लिए जा रहा हूँ। C1 के लिए और फिर C1 निकाल लूँगा न्यूलेट तो मेरी एक्टिंग पूरी परफेक्ट हो जाएगी ना, पूरी ना रन कर पाऊंगा न्यूलेट के साथ। न्यूलेट का मैंने बिल्ड भी अच्छा खासा कर रखा है, फिर फ्यूचर में हो सके तो उसका वेपन भी निकाल लूंगा। ये मेरा प्योर F2P बिल्ड है न्यूलेट। मुझे अच्छा नहीं लगता न्यूलेट, वो तो अपनी अपनी चॉइस है ना, आपको कोई और कैरेक्टर पसंद है, मेरे को कोई और कैरेक्टर पसंद है। बोरिंग है। आप C0 पे खेल के देखो, इंटरप्शन होगा ना तब समझ में आएगा भाई। एनिमी तीर मारते उससे इंटरप्ट हो जाता है ये बंदा। एनिमीज जो तीर मारते हैं ना, तीर या फिर मुक्के फैट लाते बरसाते हैं, उससे नॉक बैक हो जाता है ये। चार्ज अटैक सारा वेस्ट है, जितना रोटेशन करता सारा वेस्ट। C0 पे पूरा चैलेंजिंग है न्यूज़। C1 पे इंटरप्शन टू रेजिस्टेंस रहता है उस पर, उसके ऊपर। भाई सर्दी हो गई। इस वर्ल्ड में बचा ही नहीं कुछ करने के लिए, इसलिए सेकंड अकाउंट बनाया मैंने, उसमें खेलता रहता। लोग आते हैं कहते हैं न्यू बंदा है, चलो मदद करते हैं। स्टीम में कचीना की जगह और क्या रख सकता हूँ मैं? जेलुलिन मेरे पास है नहीं, जेलुलिन से तो मजा आ जाता। प्ले स्टाइल ही अच्छा नहीं लगता, आया तो मस्त है ये। ये मेरा आई थिंक पहला 5 स्टार होगा जो 50-50 गारंटेड में मैंने निकाला था। या तो रिएक्शन बेस्ड DPS है ना, लेकिन न्यूब्लेड का पर्सनल डैमेज बहुत अच्छा है, रिएक्शन कर लोगे तो और डैमेज बढ़ जाता है। न्यूब्लेड के साथ ये इसके साथ हाइपर ब्लूम ट्राई करता हूँ। हाइपर ब्लूम सबसे ज़्यादा किस पर असर करता है? कौन सा एनिमी सबसे ज़्यादा मस्त रहेगा हाइपर ब्लूम? मे बी इसी एनिमी ट्राई करता हूँ। इस पर अगर अच्छा गया तो समझ लो अच्छा। तो मेरा आया तो कोई खास बिल्ड नहीं है, मतलब बिल्ड करा था पहले, लेकिन वही है कि डिसेंट बिल्ड। Make yourselves at home. अबे 2 मिनट रुक जाओ। The lightning echoing song. Get with me. I'll settle this. नॉक बैक क्यों हो रहा है? पूरा नॉक बैक हो रहा है। Everyone hold hands. Cascade. 5-5 6,000 का मार रहा है, नहीं बिल्ड हो गया। Be still. उसका बिल्ड को सही करना पड़ेगा।
मैंने बहुत छेड़छाड़ करी आया था बेड के साथ। ये न्यू वाला वेपन दे रखा जो अभी फिलहाल में आया था, 16% क्रिट रेट बढ़ता है इससे। हाँ 4 पीस ये भी नहीं लग रहा। और हाँ मैंने इसके सारे आर्टिफैक्ट इसको दे रखे हैं ना, फ्लोरीन को दे रखे हैं सारे आर्टिफैक्ट इसके बारे में। आरोही जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? फिट वाला है मेरे पास फिलहाल, तो इसको दे रहेगा। मैं एक अटैक वाला अच्छा सा लगा देता हूँ यहाँ पर ऑफिस में। एनर्जी रिचार्ज नहीं, ये अटैक है कितना बेकार पीस है। मैं खाना बनाने चली गई थी तब वो बना दिया नाश्ता पानी। बना ही दिया वो नाश्ता पानी, घर वालों को भी करा दो नाश्ता पानी, हमें भी करा दो। हाँ हो गया। मैं आता हूँ 2 मिनट में, मैं बात में साथ में। Boring. Isn't there anything else more interesting to do? Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you.
too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much?
more interesting to do? Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. Ugh, it's pouring out here! Oh wait, the water levels aren't rising, are they? Too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore लो me लो so आ गया much? क्या 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 बातें हो रही मेरी पीठ पीछे। लगता है स्ट्रीमर सो गया भाई। नहीं सोया था मैं, बोल के तो गया था। वॉशरूम जा रहा हूँ। I get Lini just now with one pity. All this, all it that lucky. हाँ भाई, वन पीटी पे भाई मिल गया मेरे को भी। मौलानी मिली थी वन पीटी पे, बताओ। वो भी 50-50 था, जीत गया। मैंने सोचा कि हार जाता तो अच्छा रहता भाई। जिताने जिताने का क्या मतलब। इस अकाउंट में करूँ क्या, यही नहीं समझ में आता मेरे को। चलो वही अकाउंट में, पुराने वाले अकाउंट में खेलते हैं। सॉरी आई एम गोइंग टू टाइप टू मच। मतलब मेरे को नहीं समझ में आया। यार क्यों इसकी
नोटिफिकेशन ऑफ करके बंदा देखी। हेलो, एनीबॉडी इन हियर? चैट में कोई है तो टाइप करके बता दे। एक बंदे ने अनसब्सक्राइब कर दिया मेरे को। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। Ad Astra. Thank you for Ad Astra. ये चेक मुझे एयर मुझे पर ये मिल गया। वाह। Ad Astra. अब क्या करना है? ये क्या Ad करने की? Astra. Ad Astra Abyssal. कोई क्वेस्ट देगी क्या? आओ, उससे बात करके ये तो अच्छा। ऐसा भी होता है क्या? फ्री में प्रीमोस बांटती है। किसी ने तुम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी? देखो लीवे की क्वेस्ट करनी है। ये है क्या? 32 यार को क्या देखा? ये रहा वो क्वेस्ट। मुझे करना है भाई, इसके लिए कैरेक्टर्स बिल्ड करने पड़ेंगे। थोड़े बहुत तो बिल्ड हुए हैं कैरेक्टर्स, देखता हूँ अब हो पाता है कि चैट तुम शांत हो गई। One senses the presence of a sigil of permission. One knows not why you have come, though the sincerity of your offering is clear. Hence, you shall be granted an opportunity. Find your way through mine abode, and you shall receive an audience with the Adeptus whom you seek. Let's light it up! Freeze! बस हराना है। Dodge this! लास्ट वन। Steady as stone. Cool it! फाइनली इतना तो बिल्ड कर लिया कि हरियर नो को पार। Look, that platform is moving. So that's what this button is for. What's the hurry? Freeze! सबको फेंक दूंगा भाई नीचे।
सोचा अभी तक अनलॉक नहीं था। जाना है मुझे। What's the hurry? मुझे नहीं जाना। ओके पहले Let's light it up! फोन करना, फिर स्पॉन करना, फिर स्पॉन करना। ठीक है, नेक्स्ट वन सेंटर राइट लेफ्ट। ओके Let's light it up! सेंटर Let's light it up! and then last इसका कैसा होगा? ये Adventure time! Let's light it up! फिर लास्ट में ये। ओके ये तो हो गया। अब कहाँ जाना? वहाँ इस पे रोटेट Adventure time! प्लेटफॉर्म पे रोटेट मतलब उन्होंने कर दिया कर दिया रोटेट ही कर देता हूँ। करना है मुझे। Off we go! हाँ यार Adventure time! ये आ गया। इसको अनलॉक कैसे करना है? ये 3 जला Let's light it up! आई एम बैक। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही?
आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, मैंने तो आवाज चालू कर दी है, आती होगी। आ रही है अब? आ रही होगी। Off we go. ऐसे कहाँ से हो आप रिया जी? आवाज आवाज अब हाँ अब ठीक है। हाँ वही तो कह रहा है। One is most impressed. The path that leads through this abode defies those of अबे ordinary यार abilities. मेरे को किसी ने अभी अनसब्सक्राइब कर दिया यार, बताओ। मजा आता है इसे देखने में। सब्सक्राइब करते हैं बंदे, अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। अच्छा भी लगता है। मेरा वॉल्यूम कम था। ओ लोल लोल हो गया भाई, लोल हो गया। The one before you is the Adeptus Cloud Retainer. एक्चुअली मेरे को speak of ठीक the से matter पता which नहीं brings you ये here. साउंड की मतलब कितना रखना चाहिए, इसीलिए मेरे से कभी कभार गलती हो You जाती है, ऊपर surmise नीचे हो जाता है। correctly. कभी गेम का साउंड This ज़्यादा चल place जाता है, did कभी once self-build, वॉइस ज़्यादा चल जाती है। as did one design the बैलेंस नहीं कर mechanisms पाता हूँ मैं ठीक within. से, लेकिन ठीक है। In fact, even Gui Zhang आप and भी Rex खेलते हो Lapis Genshin? themselves खेलते found होगे one's technological accomplishments to तभी be तो जानते हो worthy of सब commendation. कैरेक्टर्स के बारे में। This place is huge, and there are so many mechanisms. Do you really have this whole place to yourself? What's it even for? Did you build it as your private mechanism workshop or something? It's just like the stories say. The Adepti leave the human world, find somewhere to go be a अकाउंट hermit, हैक हो and गया then they मेरा। research ओ and भाई invent all बुरा these लगा, amazing things. ओ बुरा लगा। One is simply अकाउंट हैक not होने की बात आती है partial ना, to तो the मेरे को tedium of 2018 की social बात याद आती है जब interaction पबजी खेलता था and मैं। wish to find मेरा अकाउंट some हैक हो गया था, peace लेकिन and मैंने हैक नहीं quiet. हुआ, हैकर से छीन लिया मैंने Find अकाउंट it अपना। one did. मेरा फेसबुक Shortly पूरा हैक कर after दिया था which उसने। you और मेरा फेसबुक arrived से ये बना हुआ bearing था, your मेरा sigil बीजीएमआई of का मतलब पबजी उस permission. टाइम चलता था, तो पबजी But का अकाउंट enough. बना हुआ था। पबजी में State उसने the पूरा matter हैक which कर दिया। brings you here at once. You have disturbed the tranquility of this place for long enough. फिर मैं तो लगा कि एक हफ्ते तक परेशान रहा था, Rex Lapis. ऐसे वैसे करके मतलब Assassinated? यूट्यूब पे पूरा सर्च How मारा था can मैंने, this कैसे be? कैसे अकाउंट रिकवर कर Such सकते हैं। a heinous वही crime. एक हफ्ते तक Who परेशान रहा dare? मैंने, एक हफ्ते तक पूरा कोशिश करी No shit रिकवर is so करने की। preposterous as to be हाथ में जैसे आई मेरी unbelievable. आईडी, मैंने देखा उसमें नंबर जीमेल सब चेंज कर दिया था भाई। One shall have to verify the truth of the कैसे कैसे matter करके फिर जब independently. अकाउंट मिला मेरे को, फिर उसके बाद मैंने Perhaps one shall quash क्या कहते हैं Liu नंबर वंबर चेंज करा, first. प्राइमरी नंबर डाला, Then फिर convene रिकवरी with the जीमेल भी other डालना पड़ा मेरे को Adepti. उसके अंदर। फिर मैंने वो बीजीएमआई का अकाउंट फेसबुक से हटा ही दिया, मैंने ट्विटर पर फिर डाल दिया। ट्विटर में वो बीजीएमआई का अकाउंट डाल दिया मैंने, Wait, मतलब what? पबजी का। Did you just say squash Liyue Harbor? Are you seriously gonna wipe out the whole city? Only a response of sufficient magnitude can negate the possibility of further incidents. कोई अकाउंट है अच्छा तो दिलवा दो दूसरे। शुरू से खेलने का मन नहीं करता। It is as you say. अब We have मैं कैसे protected बताऊं, अकाउंट तो Liyue बिकते हैं मेरे Harbor ख्याल under से, the सेल leadership होते of हैं, Rex आपको पता करना Lapis पड़ेगा कहाँ for पर बिकते हैं। 37 centuries. But in the face of this coup, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है nefarious अकाउंट सेल actors. वेल के बारे में। exceptional measures must be taken. Yikes! Quick, you gotta think of something. She wants to squash Liyue flat, and it doesn't seem like she's bluffing. Exactly what Paimon was gonna say. We made all that delicious food and gave every last bit of it to you. We were क्योंकि hoping मैंने you आज तक might कोई help अकाउंट Liyue खरीदा नहीं out. है, इसलिए मैं Not कह रहा wipe था, लेकिन Liyue out. वैसे मिलते तो बहुत सारे हैं। At least let's, discuss it first. Can't hurt for you
to get a second opinion. पैसे नहीं है खरीदने के लिए, तो Contract. भूल जाओ। A एक नई cruel आईडी बनाओ, irony शुरू से that you खेलो। should appeal to the notion after the merciless murder of the god of contracts himself. The people of Liyue ऐसे seem बोल रहे quite हूँ फ्री में। content to dispense with कौन their होगा जो contracts. अपना अकाउंट फ्री They में are दे देगा? quite nevertheless, since you come here in the लगता name है। of contracts, far be it from one to abandon one's own contractual लगता है आपको कोई obligations. फ्री में दे देगा। Least of all when you come bearing a sigil of permission. Rex Lapis infused these sigils with adeptal power when he first cast them. That power once aided humans in battle. Most of the sigil's power आप has दे दो। long since मेरे worn पास दो ही off. अकाउंट है, एक It is न्यू but a मैंने एक हफ्ता keepsake पहले ये now. बनाया जिसमें ग्राइंड This कर रहा हूँ मैं, keepsake और एक मेरा cannot be पुराना वाला taken as अकाउंट है proof of your trustworthiness. जिसको मैं 1 साल से खेल One रहा must हूँ। investigate the ये claims मैंने that you इसीलिए make बनाया क्योंकि मेरे को independently. कंटेंट चाहिए। मेरे जो दूसरे This, वाले आईडी है ना, no उसमें सब doubt, चीज खत्म is कर दिया मैंने। Mooncarver's very reason for उसमें करूँ क्या मैं? summoning us. खाली Your जाके रीजन audience बर्बाद with the करता हूँ बस। Adeptus before you is now concluded. Leave at once, and अबे आकाश, बोल बोल क्या कह रहा है आकाश? Adventure team, assemble! अबे मेरे को थोड़ा सा सिर दर्द होने लगता है ना भाई, तुम लोग चुप नहीं रहते, बकर बकर करते रहते हो ना, इसलिए मैं डिफेंड कर देता हूँ। बोल रहे हो जो बोल रहे हो भाई, बोल रहे हो तो बोल रहे हो, मुंह नहीं चुप रहता है। मतलब बोल रहे तो बोल रहे, मेरे सिर दर्द करने लगा, इसलिए मैं 2 मिनट चुप ही रख कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा शांति अच्छा लगता है। मतलब मेरे बात गलत वे में मत लेके जाना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब बोलना अच्छी बात नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत बोलते हो यार। I must leave no stone unturned. कुछ ज्यादा ही बोलते हो, मतलब ये बोल रहा था मतलब Adventure time! Yeah! इस मेरे को किस लिए? हाँ I'll catch up. All in a day's work. क्या मिलेंगे 45 पुल तो आईडी पासवर्ड दो, अकाउंट बना के हेल्प कर दोगे आप, कंटेंट भी मिल जाएगा। 45 क्या? किस बात, किसकी बात कर रहे हो? अरे वो डिस्कॉर्ड पे एक दोस्त है मेरा, वो बोल रहा है कि आर क्वेस्ट करूंगा तो 45 पुल्स मिल जाएंगे, उसी की बात होगी। हाँ अबे साले नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत टफ है। मैं बोला भाई, मैंने बोल दिया नहीं हो पाएगा मेरे से। बोलो कर दोगे क्या? नहीं हो पाएगा मेरे से, बात समझो ना, मेरे पास 2 आईडी है, उस आईडी में भी करना है, फिर इस आईडी में भी फार्म करना है, इसलिए नहीं हो पाएगा, सॉरी फॉर दिस। क्योंकि मेरे दोस्त लोग बहुत कमीने हैं, मेरे को छोड़ेंगे नहीं, बोलेंगे फिर अगर मैं कहता हूँ तो तुम नहीं करते हो, तो तुम दूसरे अकाउंट में कर देते हो भाई, सब्सक्राइबर अकाउंट में कर देते हो, बताओ, वो भी पूरा क्वेस्ट वेस्ट करके देते हो भाई, वो लोग अलग ही मेरी मार के रखेंगे, बहुत कमीने हैं साले।
एक का तो डेली कमीशन करना, तो उस पर मेरे को सुना दिया था वो लोगों ने। अरे ल्यूए तक कर दो बस, ल्यूए तक करने के लिए वो बोल। ठीक है भाई, ठीक है, नहीं करूंगा, खुश रह तू साले। मत बोला काश, क्यों क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे थे। दोस्त तो होते हैं हरामी, उनका मत सुनो भाई। अब अपने मन का बताओ। देखो मन का बताऊं तो एक्चुअली मेरे पास 2 अकाउंट है ना, 2 अकाउंट में बहुत परेशान रहता हूँ। अगर आप दे दोगे तो उसमें और परेशान हो जाऊंगा, तो सो नहीं पाऊंगा ठीक से। और फिर ये लोग गेम वूम खेलूंगा तो ये लोग अलग ही चैट में आके भाषण मचाएंगे, जो दोस्त लोग हैं मेरे। क्या ही बोलूं मैं। एक बंदी आती थी आरोही नाम से, उसके मैं डेलीज और ये करता था, क्या बोलते, कमीशन करता था और रेजन उड़ाता था। उस बंदी का ये कर रहा हूँ ना मैं, उस बात पे ये लोगों ने मेरी इतना सुनाया ना, मेरे को इतना सुनाया भाई, हालत खराब कर दिया मेरे को सुना सुना करके। Tired. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? 1 cube or 2? हाँ? वो सारे मैंने बोला ना, मेरे सारा क्वेस्ट वेस्ट सारा कंप्लीट है। देख देख, अरे देख मैं बताता हूँ, ठीक है, सुन। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे को याद नहीं है बस, तो बाकी तो समझ जा। You finally returned. How was your journey to Jueyun Karst? I see. Huh. Moon Carver, Mountain Shaper, Cloud Retainer, Conqueror of Demons. Some of these names have never come up in the intel the Fatui gets hold of. As a returning gift, I too have information हेलो for भाई, you. और सब बढ़िया Regarding the Archon's भाई, passing, लाइव में चल the रहा Liu है Qixing's सही response really से। has given me हाँ food भाई, for अपना thought. बताओ, हेलीज They've लाइव। announced that, as the Yeah. true killer has not yet been Oh. found, they are not allowing Oh. anyone to pay their respects to the Exuvia. They've even gone Chat so miss, far as to try and कौन cut सी off chat miss कर दी? information. But with the right of हाँ। dissension and all, even the Qixing isn't able to keep a कौन lid है on डिस्कॉर्ड things. पे, उसको बोलो। Exuvia? It's common knowledge in सीधा Liyue that बात Rex Lapis करने is also an पीछे Adeptus. से। The Geo Archon is also the god of contracts, and is also known as the Exuvia, prime of the पीछे Adepti. से आ गया। The mighty and illuminated क्या बोलूं मैं, Adepti of दोस्त है today मेरा, all signed क्या ही contracts बोलूं to मैं। protect Liyue way back then. Guess that explains why they're all so focused on Liyue's well-being. Naturally, they डिस्कॉर्ड both वॉइस have ऑफ the है ना, मैंने ऑफ responsibility कर and रखी है the तेरी वॉइस aptitude for the डिस्कॉर्ड job. If the ruling Qixing became unable to perform their duty properly, the Adepti have the right to take corrective action. The Geo Archon's spirit has risen, so why would the Qixing hide his vessel? Truly suspicious. Oh, right! He's the whole reason we came here! If the Liyue Qixing has locked up Exuvia and won't let anyone near, then our quest to find the Seven is already over. नल्ला दोस्त भाई, ऐसे मत बोलो यार। Oh, you're trying to find the Seven?
And just why might that be, pray tell? ऐसे मत बोलो यार, दोस्त तो दोस्त होते हैं, चाहे नल्ले क्यों नहीं हो। Nice answer. A knight that gets duped by the Fatui would really be no knight at all now, would they? But I can help you with that too, you know. Really? Give me some time. Time I to think so, find करता हो, someone. इनसे जॉब करता होगा शायद। Someone who can help you break भाई वो through this 24 साल stalemate. का तो जॉब नहीं करेगा वो। घर वाले मार के भगा देंगे कि Truly 24 साल का हो गया, The काम harder धाम they try to silence the situation, the greater the chaos that erupts. नहीं। संडे तो सब If अपनी you want to लाइफ be एंजॉय around to करते see हो, it all मतलब come घूमने crashing फिरने down, बाहर निकल के इधर best उधर। you stay alive until we next meet. Yes? देख, एक हेलीज लाइफ का बंदा आया है ना मेरे चैट में, वो मेरे मोहल्ले का बंदा। हेलीज लाइफ करके एक बंदा है। अच्छा एक मिनट रुक, तो कोई आया है शायद। Who is this? बात Leave it to me. All of it. Whatever it is. What exactly is it? I didn't quite catch your request. उस दोस्त को बोलो वो खाली बैठा है तो वही कर देगा। उसको अपने खुद के अकाउंट में नहीं हो रहा, वो क्या करेगा You आपका? seem tired. Would you like सही some बता tea? रहा हूँ। I'll brew you some. वो बोल रहा मैं अपना ना कर लूँ। आरोही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। ई- ई- लाइव आई। अच्छा यही है, हाँ यही थी यही थी। इन्हीं की वजह से मेरे को बहुत मेरे दोस्त लोगों ने सुनाया कि तू मेरा नहीं करता भाई, ये गलत बात है, ये वैसे वैसे। भाई मैंने कहा कि भाई किसी का नहीं करूंगा भाई, ठीक है मैं किसी का कुछ भी नहीं करूंगा भाई। मैंने एक का कर क्या दिया भाई, मतलब सिर्फ इनका मैं करता था, मैं सिर्फ Someone needs assistance. अब नहीं करते डेली सिम का। नहीं ये नहीं कहती हैं। किससे बात हो रही है? वो डिस्कॉर्ड पे दोस्त लोग हैं, उनसे बात हो रही है। मेरी क्वेस्ट स्टॉप है यार। वैसे बता दूं, आवाज जा नहीं रही है तुम्हारी। वही मैं बता रहा हूँ।
क्या 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 सोचा, क्या सोचा भाई? ओए मैं डेप्थ पे जा रहा हूँ, ठीक है ना? मेरे को इसीलिए मैं नहीं नहीं खोलता हूँ भाई भाई। मैं जा रहा हूँ भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। अब हो गया आइसोलेट वो सबसे। Someone एक needs ट्रोल assistance. करते रहते हैं यार मेरे को बेफालतू में। नहीं बात करना है मेरे को, जाओ सारे। क्वेस्ट कहाँ गई मेरी? क्वेस्ट क्वेस्ट ये क्या हो रहा है? बार बार क्या हो रहा है? क्या हुआ ऐसा, क्या बोल दिया? चिढ़ा रहे हैं मेरे को वो लोग। चिढ़ा रहे हैं मेरे को क्या? भाई तू ये करता है, तू वो करता है भाई, लेकिन हम जो कहते हैं वो नहीं करता भाई, ये वो। क्या बोल रहा है? अरे वही बोल रहा है, वही बोल रहा है कि मतलब कि क्या बोलते हैं कि तुम अगर हम कहते हैं कि हमारा एक खाली ये कर दो, इवेंट कर दो, या फिर ये थोड़ा सा क्वेस्ट कर दो, तो तुम नहीं करता है। बाकी सब मतलब अपने सब्सक्राइबर्स या फिर एक लड़की आ जाए तो वो लड़की करता है। मेरे को सीधा सीधा यही बोल रहे हैं। कोई भी अगर लड़की आ जाए तो लड़की कर देगा, लेकिन दोस्त लोग का नहीं करेगा, ऐसा बोल रहे हैं मेरे को। अब क्या ही बोलूं मैं। इसलिए कहा कि मैं ही नहीं बात करूंगा, ठीक है मैं ही कर लूँ। भाई यार तुम कुछ बढ़ाने का रास्ता क्यों से पड़ता है? ड्यूए का टीसी दी का है तो ये रहा। Leave it to me, all of it, Until the whatever it fallen is. कब तक है भाई? कितने दिन के बाद का भाई? बनाना पड़ेगा। अब दूं आईडी पासवर्ड बना के? मत दो प्लीज, मत देना। इतनी इतनी बेइज्जती करे वो लोग, इससे ज्यादा बेइज्जती सह नहीं पाऊंगा मैं, कसम से। अरे खेल लो ना, खेलने में क्या दिक्कत है? आराम आराम से खेलते रहो। थोड़ा 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 क्वेस्ट करो, ये करो वो करो, हो जाएगा। इतना भारी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो और ज्यादा करो। सिर्फ ल्यूए तक करवा दो। हेल्प इनोजुमा से मैं खुद कर लूंगी। मेरा मेंबरशिप भी तो अनलॉक नहीं है। मैं बोलता मेंबर्स ओनली कर देता मैं। Welcome, friend of child. And you sound remarkably sure of yourself. क्या ही बोलूं मैं? Remember, we are mere mortals. मेरे को सोचना Our पड़ेगा। ideas are fluid अब like चैट पे water. रहोगे ना, मतलब आते रहोगे ना Only स्क्रीन the पे, Tsaritsa तभी truly मैं बता has a पाऊंगा। will as solid as the permafrost. डिस्कशन But करना back पड़ेगा to वो the लोग matter से। at hand. Child tells me that he has upheld his end of your agreement. What agreement? Oh, the thing about him helping us find a guy? अभी मेरे एक भी Correct. मॉडरेटर्स नहीं आए चैट। Child promised he would मॉडरेटर्स को find पढ़ someone पढ़ to के मैं break the मारूंगा। stalemate. सारे लोग And the जब लाइव harbingers करते do हूँ तब not नहीं break आते। their promises lightly. Ah, where is that guy anyway? Child is currently at Leoli Pavilion. वाह। Oh,
एक There तो are two styles of ये cooking in Liyue, अकमल था मेरा known as मॉडरेटर Lee और style केन था and Yue style. They और have been शायद competing इंसो for भी है, ये centuries, तीनों में से कोई but नहीं आया। neither has emerged as the clear winner. The flagship restaurant of the Lee style is the Lily Pavilion. The owner especially chose to open the restaurant at Feiyuan Slope so they could ठीक है, compete कल face तक to बात face with the Shinyue kiosk, which is बता the देना, flagship restaurant बात of the कर लो Yue फोन style. से पहले। हाँ देखो, मैं डिसाइड मतलब सबसे बातचीत करके डिसाइड करूंगा ना, वो लोग वरना वो लोग कहेंगे न्यू आईडी कह रहा, मैं बोलूंगा कि हाँ न्यू आईडी है, फिर बोलेंगे किसकी आईडी, तो मैं बोलूंगा इनकी आईडी, सब्सक्राइबर थे बोल रहे थे यार यार खेलना है मुझे। फिर उसके बाद पता चलता है वो लोग मेरे को झाड़ना शुरू कर देते कि भाई तू ऐसे ऐसे करता है, ये सब गलत बात है, हमने तुम्हें ये चीज बताई है, तुमको बोलते हैं कि ये जैसा करते तो ये नहीं करता तू। ये सब चीजें क्या बताऊं आपको। वो रहा चाइल्ड, नाम तो चाइल्ड है लेकिन है। Aha, you made it. As promised, I found someone who can help you. Someone who can solve the mystery of why the Liyue Qixing would hide the Geo Archon's vessel. So, where is he? In Lily Pavilion? He certainly is. Come, I'll introduce you. I took the liberty of setting up a business dinner, as per the Liyue custom. Bye, 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 Aravi. Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival in the room you booked. अभी जोंगली की एंट्री होने वाली है। अभी होगी जोंगली की एंट्री भाई। ये बंदा खाते पीते हुए एंट्री मार रहा है। Hi. एबिस कर लेते हो कभी कदार, वरना दोस्त लोग कर देते हैं मेरे। Allow me to introduce Mr. Zhongli. मतलब एबिस में बहुत कोशिश करा मैंने, ये नहीं कि मैंने कोशिश नहीं करा, मैंने बहुत कोशिश करा, फिर उसके बाद दोस्त लोग को दे देता हूँ कि मेरे से नहीं हो रहा यार, कर दे। वो लोग कर देते हैं, पुराने प्लेयर्स है ना, मैं तो नहीं हूँ। Indeed, Wang Sheng's line of work can be जब sensitive at times. जेंशन लॉन्च हुआ था तब Let's से just खेल say रहे they हैं। understand when discretion is needed. तो And we, एक्सपीरियंस the है, Fatui, have always been glad to do business with friends skills who हैं। walk in the shadows. मेरे स्किल इशू है, स्किल इशू है मेरा, इसलिए मेरे से नहीं होता। It is an honor to meet you. I have heard tell of you from Mondstadt. मैं कोशिश तो करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता। Is Wangshan some kind of business involving dealing with people? Indeed. कौन वही जो बात कर रहा था अभी पीछे से? नहीं वो तो न्यू प्लेयर है, मतलब दोस्त है वो भी, लेकिन वो न्यू प्लेयर है। एक इंसो नाम का बंदा है, उसका भी एक चैनल है, इंसो प्लेयर्स ही, तो वही करता है। Did you think he was some sort of सब hired दोस्त killer? में 3-4 दोस्त The Fatui हैं, calls जब many स्ट्रीम such people करते हैं तो friends, वही but the लोग Wang जैसे Sheng funeral parlor वो does सबसे not ज्यादा dabble in एक्सपीरियंस such बंदा है, क्योंकि वो business. बहुत पहले से किया था, तो वही हम सबका ostensibly. करता है। Well, they are still... I shouldn't say too much. In any case, I brought you to meet Mr. Zhongli because... Because I can bring you to see Rex Lapis's vessel. What? Don't be so surprised. Sure, the Geo Archon's body has been squirreled away by order of the Tian Xuan Ning Wang. मतलब सबसे ज्यादा हम लोगों में let's hear what Mr. Zhongli has to say, shall we? उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ये सब, क्या बोलते हैं, मतलब जेंशन का रोटेशन कैरेक्टर्स बिल्ड और कैरेक्टर्स के टैलेंट्स, स्किल, पैसिव, वेपन पैसिव, क्या क्या होता है भाई सब पता है उसको, A to Z। The times have changed. You must have felt it too when you were मेरे को बस रिएक्शन के बारे में पता है, ये टीम लेके जाओ ये रिएक्शन होगा, वो टीम लेके जाओ वो रिएक्शन होगा। As you have seen, the मेरा सबसे ज्यादा time of the फेवरेट रिएक्शन है Adepti is हाइपर ending, ब्लूम, and the time of mankind क्योंकि हाइपर is ब्लूम में भाई slowly मजा dawning. आता है।
In rotation. years past, Leo's tradition was that a huge memorial service be held to mark the passing of every Adeptus. But this time, the Qixing have made no attempt whatsoever to respect this tradition. It is sacrilege. Yeah, the killer hasn't even been इसमें caught हंसने yet. वाली क्या बात है? मेरे को समझाना जरा. समझा नहीं है. Deicide or not, the concern of the Hello, Wangsheng sword boy. funeral parlor is ये आ गया this. आकाश. When the कैसे हो? ritual to receive this god is so kingly, डिस्कॉर्ड में नहीं ना आ it सकता is तो all मेरे the डिस्कॉर्ड में नहीं more ना आ सकता आकाश. egregious for his final send-off to go unattended to. Traveler, Child has told me a lot about you. Hyper Bloom life Since you have had saver dealings from with the new animal players. archon, हाँ भाई ये तो है. could I ask you to help me prepare the Geo Archon's last rites? Well, if you really think about it, we don't लाइफ have सेविंग any मतलब other उसके लिए choice. टीम भी तो चाहिए मतलब 5 Indeed, स्टार चाहिए. no amount of नाहिदा consideration चाहिए can change मिनिमम this हाइपर outcome. ब्लूम का और The कुकी C2 Tianquan और Ningguang शिनशो has forbidden anyone from और एक accessing DPS Rex हाइड्रो में Lapis' vessel, या फिर which डैंड्रो of में. course you would need to इलेक्ट्रो में भी access if चलेगा. you were to achieve your goal of meeting all of the 7. Precisely. Only by participating in the rite of parting डैंड्रो में will you ज़्यादा be able सही to see रहेगा the form of Rex Lapis क्योंकि वो again. सीड ज़्यादा जनरेट होंगे. सीड्स ज़्यादा जनरेट होंगे तो फिर If we are agreed, रिएक्शन होगा तो वो come with डैमेज भी me. ज़्यादा पड़ेगा. We will speak of the details as we walk. All right, my bridge building work here is done. Turned out well, didn't it? You can go if you want to. Don't worry about me. I might just have a few more drinks and get acquainted with these things they call chopsticks in the meantime. Son of God. क्या बोल रहा है? तेरी चैट देख ली मैंने. यो छोटे बॉय यो 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 देख ली थी तेरी चैट मैंने. बैन दूं तेरे को बैन देता हूँ मैं. तू नहीं सुधरेगा. रुक तेरे को बैन देता हूँ मैं. क्या लिखा था डिलीट कर दिया. मत 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 देखना तुम. मत ही देखना. रिया जी आप मत देखना. इसको देता हूँ मैं 10 सेकंड का बैन. छोटा बॉय लिखा था ना भाई. तूने कुछ और ही लिखा था वहां पर. देखा था मैंने क्या लिखा था. After having experienced the अरे land of the absentee पर्सनल Archon, चीजों के बारे में उसने लिखा था. how समझ does it जाओ. feel to know that our Archon and Adepti are here all around you in Liyue? 10 सेकंड का ज्यादा नहीं. 10 सेकंड का दिया है. I see. So you're that बदतमीजी sort नहीं of बर्दाश्त person. होगी. दोबारा में कोई It's बदतमीजी not a करोगे bad 10 thing. घंटे का पड़ेगा तुमको. But I suppose you have yet to experience the substance of Liyue's 3,700 years of divinity. Organizing the rite of parting should prove to be an enlightening part of your travels. Liyue is the most prosperous of the 7 nations. छोटे भाई defended छोटे by सोच कुछ बड़ा deities सोचो. ठीक है and बड़ा ruled बड़ा by the देता हूँ. Qixing. 24 घंटे का दूं बैन तेरे As को. such, the बड़ा diplomatic सोच लिया भाई. maneuverings of the Fatui have दूं gained 24 घंटे का no बैन. purchase here. Ningguang of the Qixing has सोच always लिया been बड़ा. on her guard against the Fatui. That is in all likelihood why Child wants to make use of the Wangsheng funeral parlor's connections. नहीं समझी कोई. What would Child कोई get नहीं out of रहने us दो doing the अगर rite of पर्सनल parting था तो. anyway? हाँ पर्सनल तो था. I neither know ज़्यादा ही nor do पर्सनल I बोला था. wish to know. As far as I am concerned, सही बोला the सन अब वर्ड. Fatui are merely अबे financial सालो तुम लोग sponsors. चैट में आके I मेरे को only ट्रोल wish for करोगे. Liyue's भाई traditions to endure. These are the advance funds that Child नहीं has करो. provided. If you प्लीज use them up, नहीं you करो can ये go सब. to him to अरे apply कहते हैं for नहीं any करो. subsequent funding. Wow. Well then, let us be off. The first step in our preparations shall be to obtain some prize Noctilucus jade worthy of a deity. Someone needs assistance.
हमको छोटा बॉय गिफ्ट दिया है। मैंने कब गिफ्ट दिया तेरे को? कुछ भी बोलता है भाई। Welcome to the Jade Mystery, my good friends. Would you like to try your luck betting on Jade? This could be your lucky day. It's cheap and it's fun, and who knows, you just might strike it rich. Betting? No, we're here for... what was it again? क्या बोल रहे हो? कुछ Noctilucous समझ में नहीं आ रहा है Jade, मेरे of radiant grade at the very least. Radiant grade, Noctilucous Jade? I see. You're not a tourist. My apologies. I have some here for your perusal. What do you think? The Jade Mystery is an old name in the jade business. Just look at that wonderful quality. Rex Lapis doesn't often bless us with such finery. Go on, pick whichever one you like. These 3 pieces really do look pretty. अच्छा Not like the ones you usually dig up. अच्छा ओ But how do we pick? Should we just टाइम आउट grab का one गिफ्ट and बोलते go? हो? वाह भाई। Very good. It seems you have learned some tricks of the trade. What do you think, Mr. Zhongli? How should we pick from these pieces of Noctilucous Jade? Oh? You want me to decide? That is fine as well. If it were me, the answer would be simple. Oh? And that would be... I'll take them all, boss. Oh, you act with such panache, good sir. I always knew you were not a man of ordinary caliber. Oh, wait, boss! That one didn't count! We need to discuss it again! ओए चैट में भाषण नहीं मचाओ। लड़ाई झगड़ा नहीं, अच्छी बात नहीं है। Hey! If we only need one for the ritual, aren't we wasting 3 times the more if we buy them all? 1 घंटे का गिफ्ट दे दो उसको। गॉड भाई नहीं करो यार। Oh, Mora. It is as you say. I suppose I overlooked this particular aspect of the transaction. Huh? How do you not think about Mora when buying things? If one must always consider Mora before acting, then in all things one is bound by Mora. What? All ये Mora अभी is दोस्त है currency, तुम्हारा। but not ये अभी all दोस्त तुम्हारा नहीं, currency मेरा is नहीं है। ये Mora. किन का दोस्त है? मेरे दोस्त का दोस्त है। मतलब इसके लाइव पर आए थे। दोस्त नहीं। मतलब ये बंदा आता है हमारी डिस्कॉर्ड पे आके स्क्रीन शेयर करता है, स्क्रीन शेयर करके गेम दिखाता है हम लोग को। Is this how the rich live? Well, he knows a lot about big money, but not a lot about big savings. No need to waver. Even when I am constrained by Mora, I have ways of working around my limitations. Evaluating the quality of Noctilucous Jade is indeed very tricky. As crude ore, there is little difference in texture, lustrousness, and internal pattern between good and bad jade. Only after the item made using Noctilucous Jade has taken shape will you be able to see whether it is up to par or not. If you return to those crafty merchants to quibble, they will counter by saying that your crafting bench is to blame, or that your heat control was poor. Whoa! To think it's that easy to get cheated. But there is a way to truly evaluate this jade, and a true insider would know it. A fool sees the pointer and misses the moon. What does that mean? If you point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the moon, while a fool will only see the finger. The patterns, the facade, these are all the finger. Noctilucous Jade is a mystical stone used to light up the darkness, and so its brightness is the important thing. It is the moon. Noctilucous Jade of excellent quality would have superior pyro-affinity. In other words, the bluer and brighter the luster of the ore under high temperature, the higher its quality.
I have imparted the priceless secrets of the jade trade to you. Now, all that's left is to put it into practice. Priceless, huh? Hyman's just sad that we might never be able to use गिफ्ट it दे दिया again. क्या? हाँ मिल गया उसको गिफ्ट 10 मिनट का. We're back to buy some 10 मिनट rocks, तक वो boss. शांति से बैठा Can रहेगा. you let us burn them first? Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? That would... well... fine. As you wish, then. गिफ्ट मिलने के How बाद about this? लगता है I कुछ can नहीं. take a small sample of all three. I'll take a bit of a loss. We'll count it as a friendly gesture. Don't worry. I know the rules. As long as we can prove that it is good jade, you will not take a loss. All right. Take these as samples. I've carved them off with a knife and tagged them to boot. Aren't these too thin? Even paper's thicker. No, even a bug's... Stingy? I've already been very generous. Any more and you may as well have my neck. But wouldn't something this thin go poof if we held it to the fire? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf to vomit up the food in its stomach. Nonetheless, under the right conditions, these thin slices will serve. What sort of conditions? While we add the high temperatures using pyro, we can use hydro to reinforce it from within. This way, the samples will not disintegrate immediately. Oh! Oh, sir, to think you were this learned. Thank you for your understanding. Strictly speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is बहुत boring unfair. है ये वाला question. Trade in Liyue must be based upon fairness. Well, guess we just need to find a place to try this out. Oh, Paimon remembers! We once saw this big pot down at the Data Upa Gorge in the camp of the hilly churls from the Meaty tribe. It's real sturdy and should be able to take the elemental reactions. Now, let's pack those samples up and make a move. कहाँ जाना? कहाँ जाना? Liyue connected है Mobstat से Arkham Quest. It has been a long time since I last set foot in the Nation of Wind. A friend of mine from Mondstadt would always bring a few bottles of locally brewed dandelion wine whenever he came to visit me in Liyue. It must be said that the famed liquor of the land of pastorals is far better than Sumeru's frigid snake wine. That's the pot! It looks like the hilly trolls are still using it. It's a bit impolite, but we gotta cut the line. क्या करना है? ये मारना है क्या? मारो! मारो! Oh, so sorry. Teamwork is dream. Time to clean up. मारो! मारो! ये बताइए. Cool it. I'll protect us. Dodge this.
turtles sure have big appetites. This soup looks like it could be used as our hydro-elemental protection. Let's fire it up and begin our experiment. We're ready to go. Paimon will help remember which one of the three is which. Use pyro to keep making the pot hotter until we get the results we need. Mr. Zhongli said that the shinier and bluer the ore gets, the better it is. So, pay close attention. ये एक्सेस करने का तुम क्या रहा है पता नहीं क्या होगा क्या करना है use pyro to hit the pot. Let's light it up. ये करना है Whoa! That light came from the first Noctilucous Jade! Hilichurls are surrounding us again! Were they attracted by the light? Such nosy neighbors! Let's take care of them and continue with them after. Cool it! La 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 la. This moment will be frozen in time. Freeze! Dodge this! Leave it all to me. Cool it! Dodge this! What's the hurry? Yo. Steady as stone. Freeze! Dodge this! That light came from the second Noctilucous Jade, didn't it? More Hilichurls? They don't give up, do they? Looks like they're mad that we ruined their food. Everybody stand back. Adventure time. I'll protect us. I must leave no... Cool it! Dodge this! Steady as stone. Freeze! Let the show begin. Let's light it up.
wasn't it? It was so much shinier than the rest. Let's go with that one. Let's head back to the Jade Mystery to buy some jade. क्या भाई Hey, करना है? shall we? You're back, my friends. I've kept the goods for you. Which of them would you like? Huh? No, it wasn't that one. Paimon remembers that it wasn't very bright. Think a bit harder. Exactly. That's the one Paimon remembers too. No problem. If you have your eye on this one, you can have it. Then we'll take a box of the third type of jade. Done. All the same, and pardon me for asking, but I'm curious. Whatever do you need this much top-quality Noctilucous jade for? I suppose it would not hurt to tell you. We need them to make implements for the rite of parting. Parting? Oh, dear. I'd heard the rumors, but had given much thought to them. This means that Rex Lapis really is... Oh, it's hard to believe. Even though the Jade Mystery has been in decline, we have always been under his protection. It is said that when our Lord lost his way while going incognito in the city 200 years ago, it was a spoon from the Jade Mystery that he had used to sample the local delights. Alas, alas, all things must pass. Well, if this is to be used to say farewell to Rex Lapis, then I shall sell this to you at half the price. Are you sure? You didn't want to even give us an inch before. If not for our Lord's protection, this city wouldn't exist as it does now. No proprietor could earn money off such a thing. I'm sure Rex Lapis will feel your sentiment, boss. In the safe hands of the Liyue Qixing and good honest merchants such as yourself, I for one believe that Liyue will continue to prosper as it always has done. All right. Thank you, my friends. What's with me getting all sentimental like this? I'll practically be giving away all my fortune at this rate. Now that we've made our choice, let's take this Noctilucous jade back. Hey, wait a minute. He said it was half price, not that we could leave without paying. Oh, right. I'm sorry. I must have forgotten to do that too. Let me see. As I thought, I didn't bring any. Any what? Mora, my apologies. Another oversight on my part.
that won't do. This isn't some small sum. Oh, wait! Didn't Child give us some advanced funds earlier? That's a relief. Have a look, boss. Is it enough? It's fine. Just enough for half price. Though, to be honest, it'd be alright even if the sum wasn't quite enough. Well, it's settled then. Let's take this jade to Yujing Terrace. That's where we plan to hold the rite. Look at you bossing everyone around. You didn't cough up a single mora. It seems that we must. I will keep that in mind. Thanks, both of you. Benny's Adventure Team, assemble! Or not. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go! Benny's Adventure Team, assemble! What's the hurry? We can leave the jade here. I have already called for a jewelsmith to shape them into the implements that we will need. Ah, yes. I have yet to go and see Child. So, as for the jewelsmith's remuneration... Guess we can't do anything else. Also, is this where we're doing the rite of parting? Yes. I have already rented this location, and have begun making preparations for the rite. The Liu Qixing have agreed to this arrangement. But when something this big happened here, should suspects like us really be at the crime scene? We might get caught by the Millilith. Although with that said, since we got back from Dwayne Karst, none of those pesky Millilith soldiers have come chasing after us. Wonder what that's about. Also, the, Rex Lapis vessel... Traditionally, we call it the Exuvia. Ah, right! That's what it was called. You seem to know everything, Mr. Zhongli. So, was this Exuvia hidden
away by the Qixing? I mean, we haven't even figured out who the murderer is. One must think that they already have someone in mind. Or perhaps they already know. Surely they must have found all the evidence that there is to find here. These things are for the authorities in Yujing Terrace to consider. Trying to help would probably only add to their troubles. Before the rite is conducted, the Exuvia will be kept temporarily in the Golden House. Golden House? The only mint in Liyue, which is to say the only mint in Teyvat. All the mora that flows throughout the world is minted there. Wow! Oh, no! Paimon wasn't thinking about anything bad. Paimon thinks it suits Morax. But why do you know this, Mr. Zhongli? Since the rite of parting has the approval of the Qixing, it is a semi-official event. As such, perhaps each has their motives. But this is the capital of commerce. A little exploitation once in a while is not unacceptable. In Liyue, where the god of contracts reigns, only contracts may not be betrayed. I, for one, have no issue with little maneuvers outside their remit. Well then, we should go and prepare the perfumes used in the rite. Perfumes? Where'll we get those? Do we buy them? No. Perfumes used to honor the gods must be freshly decocted. The quality of the silk flowers we require is also special. Silk flower petals contain a fibrous material of good quality, often used in brocade making. Its scent, however, is most elegant, and is especially suited for solemn events, like giving offerings to gods and adepti. It's time for Zhongli's lectures on high society again. We shall not speak of the details right now. Follow me. We shall go to the merchants to purchase our ingredients. Catch the wind. Hey, boss, do you sell silk flowers here? Silk flowers? We certainly do. Which kind would you like? Which kind? The good kind? The best kind? Remind Paimon what kinds there are again? Ugh, you ignorant shoppers. Always coming in here with your stupid questions. Golden House Maiden, Valley Weaver, and Fate's Yearning. One of each to start with, if you don't mind. My goodness, this gentleman is quite the connoisseur. You two must be his servants. Please refrain from any further attempts to contribute. I'm sorry? Ah, yes. We've met before, haven't we? Sorry, traveler. I shouldn't have spoken to you in that tone. Now then, please peruse at your leisure. Do let me know if you have any further thoughts. Silk flowers exhibit different properties based on how their environmental conditions differ from their ancestral habitat. Nevertheless,
These are fine specimens, excellently preserved. Just look at the abundant foliage here, and these stamens, glamorous as a maiden of the Golden House. This strain is an evergreen, and mostly grows under complex hydrological conditions. By contrast, this variety thrives in any dark, damp location, often in large clusters. Morphologically, it is distinguished by the profusion of petals and densely packed stamens, though its powerful scent gives it away just as easily. Lastly, this strain is quite the recluse. Unlike its exuberant cousins, flowers and foliage are minimal, and when in season, it has a subtle yet enduring scent. It was first discovered by the ancients when they scaled the mountains in search of the Adepti. Silk flowers have all but disappeared from the wild today due to geographical changes over Liyue's history. Most are not grown by horticulturalists. Wow! A true connoisseur. Most of that was news even to me. I possess but a smattering of trivial knowledge. My traveler friend is the one to watch. They are on track to set foot in every corner of the world. Oh, Mr. Zhongli, you're way too humble. So, which silk flower did you want anyway? I'll take them all, boss. Again? How can I put this? When purchasing opera tickets, it is natural to decide based on which singer has the most melodious voice. The same logic applies when purchasing a pet bird. But this silk flower purchase is not an analogous case. The same logic does not apply. Perhaps you don't know. Tradition states that we should decoct perfume from different subspecies of silk flower when making an offering to a statue of the Seven. Rex Lapis will then make his own choice between the scents. Like several other tedious and complicated traditions, this one has become simplified over time. But this is the only rite of parting to take place for one of the Seven in 3,700 years. As such, I do think we should honor tradition down to the last detail in this case. Now that's settled, a question. Do you have any Mora on you? You forgot to bring money again? Zhongli. If I may interject, did I hear you say that these flowers are to be an offering to the Lord of Geo himself? Yes, in a sense. Gosh, well, why didn't you say so? I heard the awful news about what happened at this year's Rite of Dissension. It would be bad luck to say it out loud, but I've been worried about our dear Lord ever since. I'm worried that everything I've heard is true. Since these flowers will be used to glorify our Lord, they're free of charge. Just don't forget to pass on my regards. Are you serious? Why wouldn't I be? I would be nobody if not for Rex Lapis. If he hadn't written those poems in praise of my wares, they'd only be worth a fraction of what I can sell them for today. Huh. So much folklore here revolves around Liyue's deity making cameo appearances in support of local businesses. Thank you, boss. I think I speak for all of us when I say that your generosity has saved our skins. Our skins? You were the one who forgot to bring money! Please, it's the least I could do. So, now that we've got the flowers, how do we make the perfume? Ideally with the help of an expert. Unfortunately, none of my acquaintances have personal experience in the art of decoction. Talk about first world problems. Hence, I need you to help by asking around in the city. Try the common folk, especially women. So this time we get to go around town looking for nice-smelling ladies to talk to? Paimon likes this job. I will wait for you near the statue of the Seven.
Meet me there when the perfume is ready. Maybe we can find some good candidates at the Adventurers Guild. Let's ask Lan! She's master of the Liyue branch, right? I didn't know you were such a slacker. For a favor. I stopped accepting commissions a long time ago. Sorry, you two, but you'll just have to ask another adventurer. Oh, it's not that kind of favor. It's just a teeny tiny thing. Wow. Just wow. Do I look like the kind of girl who wears perfume to you? I think you're underestimating the kind of person I am. Well, Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lan. What's your secret if not perfume? Now that you mention it, yes, there is something. What is that scent? Oh, it must be from the Qingxin flowers I picked on the way back. I forgot I still had them with me. Aha! The truth is out. Lan's got a soft spot for wildflowers. No, they were for medicinal use only. Anyway, this is a pointless conversation. If you want to know about perfume, try talking to Qiming. The fortune teller, right? Paimon remembers she smells pretty good. Thanks, Lan. See you around. Hello. How may I help? We've come to ask you a question. Perfume? I rarely think to use it, let alone about how to make it myself. That said, some of the cosmetics I use are scented. Perhaps that's the cause of this confusion. Since I usually set up my stall by the docks, I avoid perfume like the plague, because Celestia forbid those lusty sailors catch a whiff and come hunting for the source. That's the worst thing Paimon's heard all day. While we're on the subject, have you never heard anyone mention Yingar's homemade perfume? Yingar? Oh, as in scent of spring Yingar? Yes, that's her. Many a rich family's daughter has gotten her to make perfume for them. Apparently, her homemade product is better than anything you'll find on the market. Great! This is just the intel we need. Finally, we're getting somewhere. Well, hello. You found me at last. I've been waiting for you. What? How did you know we were coming? Oh, I heard a rumor about a couple who were snooping around town looking for a sweet-smelling lady. Actually, I was starting to worry you wouldn't find me. This is the ultimate test of my appeal, after all. Snooping around? Why are you making it out like we're bad people? What can I say? People love to be more discreet in the future if you don't want word to get around. Relax. I know why you're here. You want to get your hand on my homemade perfume, don't you? What kind would you like? 3 in one go. My goodness. You have extreme tastes for someone your age. Maybe the rumors I heard were true after all. You're on the prowl and need some sweet-smelling ammunition? Is that it? Is that the best you could come up with? Even if you were genuinely offering perfume to a deity, that doesn't explain why you'd need 3 kinds.
Sorry, your story just doesn't hold water. Zhongli was right. People don't remember this tradition anymore. As one of my favorite poems goes, "O cherry tree, begrudge not thy blossoms as they are deflowered in the spring, for come winter, even thy sturdiest wood shall wither." That went over Paimon's head a little. In short, I'm happy to help. Traveler, you can be my assistant, but you'd better make sure I'm the only person on your mind while you're hanging around with me. So, where is a good place for making sweet, sweet perfume? Where is that? Mondstadt? We're only making some perfume. There's no need to go to such ridiculous lengths. Somewhere closer to home will do. Let's go for the kitchen at Wanmin Restaurant. Try something new at the Wanmin restaurant. I've had a word with Chef Mao. We can start work now. Are you ready to please me? What did you say? I meant make me proud, as my assistant, obviously. While I'm setting up, you can go and fetch some water. Leo's really got a lot going for it. Try something new at the Wanmin restaurant. This water will do nicely. Now, I need you to extract the silk flower essence using a crafting bench. Perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let me teach you. Very carefully, take hold of the mortar and pestle. Gently does it. You need to keep your wrist firm so your hand doesn't slip. Now use your strong hand to stir it with a persistent rhythm. Keep going until the juices start to come out. Ooh, you're a natural, like a fish to water. Now take these and try it out on your own using a nearby crafting bench. Don't forget to do all three. They look visually identical during the essence extraction process, but I will put them into separate containers when the perfume is ready. Wow, this is some exquisite silk flower essence. On to the next stage, the most important one of all. The essence is placed into water and simmered over a low heat until most of the water has boiled off. You must take care to control the heat during this process. If the temperature goes too high, it will affect the scent. So please focus on controlling the heat. This is the final step. Don't waste a drop of that essence now. We want all of it in there. All three perfumes are ready, and you, my friend, were a wonderful assistant. A testament to the lengths you will go to for romance. It's so rare to see nowadays.
Wow, you actually remembered my throwaway comment. You know, you're cuter than people give you credit for. If I didn't have my guard up, I can see how easily one could be taken in. Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? It might just help you match the right scent to the right occasion. Paimon wants to hear this. This first one is sweet as candy, straight out of a fairy tale. Younger women will love it. The second one is for those with more refined tastes, the first choice for daughters of high society. Finally, the third one has a soft but lingering scent, like a mist that captures the last light of dusk. Mature women adore this one. All clear? Don't get them mixed up now. You'll ruin the mood. Good. Be sure to come visit if you ever need help with anything, okay? I'll leave you with some parting words. One who tries to sail 3 boats simultaneously should be careful not to go overboard. Come and hang out with me at Scent of Spring sometime, okay? Let's take these 3 perfumes over to the Statue of the Seven. Mr. Zhongli's probably been waiting a while. Try something new at the Wanmin restaurant. We've brought the perfumes, Mr. Zhongli. Did we take too long? You were just staring up at the statue. Oh, you're back. Don't worry, I haven't waited long. Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept over Liyue, this was but a brief moment. Well, how can a person compete with a statue? That is true. Well, have you brought the perfumes? 3 sets, and not 1 less. Thank you both. Let us offer them up. This is the first kind of perfume. Miss Yinger said that it's sweet as a dream, and it's liked by younger ladies. This is the second kind. It's got an elegant smell, and the daughters of high society love it. The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist. And it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? That's the one older ladies like, right? Does that mean that Rex Lapis is actually an older lady? Perhaps. Perhaps. Rex Lapis has taken on countless forms. Perhaps that really was one of them. What a shame. We only got to see the giant dragon form, and... Let's hope the Qixing can catch the real killer. We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. So, we finished another step in our preparations. What's next? Next, I would like the 2 of you to help me borrow the cleansing bell. Cleansing bell? At present, a friend of mine named Madame Ping
is the guardian of the cleansing bell. She lives near Yujing Terrace. If you ask her, she will know what to do. Sure, but aren't you going to come with us? Ah, I have certain reasons why I cannot be there in person. Please, do this for me. Man, why has he gotta be so secretive this time? What's the hurry? All things must change. It's nothing. It's nothing. I just thought it a great shame that so many of these glazed lilies have wilted. What happened to them? Back in my day, people said that glazed lilies can read human hearts. If they heard beautiful sounds like laughter and singing, they would also bloom joyfully. But if they heard too much wild gossip or slander, they would quickly wither away. So that means these flowers feel what's happening in Liyue? Yes, the rumors of Rex Lapis's death are no small matter. They are everywhere. Some say it was a Fatui plot. Others say that the Qixing made it all up. And still others think that that which lies in the deep is breaking free. This harbor is like a mountain of dry tinder. One spark, and the fire will consume us all. Well, I shall say no more. This old woman's grown too old and naggy. Did you have something to say, youngster? Borrow something? Oh, you've come to borrow the cleansing bell, yes? Apart from that, I don't have anything of value that you youngsters might want. But it was not originally mine, either. That trinket used to belong to a friend of mine. I was a vain beauty when I was young, and I would pester him for that bell all the time. He could not dissuade me, and so he gave it to me. But he said that if someone should come to borrow it, I must not be loath to give it away. It has been many years, and who knows how many times someone has come to borrow this bell. Still, though, I can't recall when it started. It's been a long time since anyone has come to borrow it. Oh, these old bones are so slow to look for things. I doubt you can wait that long. What a weird thing to be proud of. All right, children, there is no need to worry. I didn't place the bell very far away. Do you live near here, Granny? Whoa, but this is Yujing Terrace. It's gotta be expensive. Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? My entire household is in here. How does that work?
Paimon would fit in there. And why do you need Paimon to go in anyway? Can't you just lift the lid and look inside? Oh, youngsters. I simply mean that the bell is somewhere inside this teapot, and you are quite welcome to borrow it. If you can find it. Where are we? What just happened? Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. Quickly now, go fetch that bell. Whoa! That sounds like Granny's voice. So, this is her teapot? What's going on? Oh dear, so many cobwebs. It seems I really haven't cleaned it in a long while. Sorry to trouble you, children. Please help an old lady clean up. Someone needs assistance. You notice? The cobwebs were made of elemental energy. How long has it been since Granny last swept this place? I'll protect us. Dodge this! You know, with such a special teapot and the cleansing bell, do you think this old granny could also be an adeptus? Paimon's more and more convinced that she's an adeptus. But don't they all live in Trillium Karst? Why would she stay in the city? Yeah. Adventure time. Off we go. Don't worry, I got this. Dodge this! Let the show begin. Steady as stone. Ha! Ha! I must leave no stone unturned. Let's light it up! Oh, so sorry. Come on, we can do it. Ha! Let's light it up! Freeze! Adventure time. That's gonna hurt in the morning. Ha! Steady as stone.
Let's light it up! I must leave no stone unturned. I'll catch up. Let's light it up! Cool it! As a dutiful maid would. Dodge this! Someone needs assistance. Going in! Let the show begin. Freeze! Ah! Let's light it up! Leave it all to me. Steady as stone. How many levels does this teapot have? It would be nice if we had one of these too. Or at least we wouldn't have to camp outside. Oh, you found it. Youngsters are so quick on their feet. Oh, now, let me see. All right, that'll do. Oh, in and out in no time. You youngsters really are quick. The Chising. Those children stopped letting my friends and I into their council long ago. Still, they've done well recently. We old folks are content to be idle. Paimon kinda knows what you mean, but is also kinda confused. Are you really giving us the bell just like that, Granny? Don't you think it's weird? Something's just happened to Rex Lapis and then we come running up asking for it? Oh, don't be silly. Liyue Harbor has been through a great deal in its history. In that time, it has seen the departure of countless Adepti. But no matter what, we have always performed the rite of parting first before any other matters. To cry, "Catch the murderer" at the top of one's lungs, but ignore the rite of parting. That, to me, is what is wrong-headed. Now that you have come to borrow the bell, I guess that perhaps an old friend of mine has finally decided to take matters into their own hands. So, why would I be unwilling to lend you the bell? Hey! It belongs to
Granny! We're supposed to return what we borrow. Oh, let you keep it. You really are a frank child. If you want it, you can keep it. But this bell gets homesick sometimes. Who knows? It might find its way back into these old hands. Well, you must have things to do. Since you have the bell, you should return. Oh, and do tell the person who sent you that if they have time, they can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. We will. Thanks, Granny. Indeed, this is the cleansing bell. It's in good condition. Let's place the perfume we've prepared inside. Of course. How would I know that the bell was with her otherwise? That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. Oh, yes, that old granny asked us to tell you something. If you have the time, you can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. That tone does not suit you. Still, her teapot is indeed very good. There are none better for brewing tea. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our preparations? Next, we need to purchase kites. Ooh, Paimon loves kites! Are you taking us kite flying? Is this our break time? No. Kites are children's toys, yes. But they also play various symbolic roles in Liyue's rituals. I will explain it to you. But our next course of action should probably be to purchase the kites first. Oh, sure. Curiouser and curiouser. Sir, you're here. The 7 kites you asked for have been made to order. Would you like to take them now? Yes, thank you. It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, we used to get orders from people of all walks of life. Well, this is Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor, so he's probably well-versed in all these walks of life. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him.
seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well, but he likes talking about less useful topics instead. Well, that's because I prefer to share fun things with you. Children's toys are very fun things, that's for sure. I enjoy watching the children at play as much as anyone else, but there is more to it than that. Finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been honed over thousands of years, and there is meaning behind that. I have made kites in Liyue for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down from my ancestors. The meaning of these 7 kites is far from banal. Indeed. These are decorations used in the rite of parting. The 7 kites represent the 7. I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the Animo Archon. As for the kite that honors the Geo Archon, one must follow the contract given right down to the last letter. These patterns are ancient, and you can also find them in the Golden House. Ah, Paimon's heard that name before. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the passage of time. All this on a single kite. Truly astonishing. Justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame. As does that which the Cryo Archon once... Yes. These details are masterfully done. The compliments of a learned man truly are pleasant. Well then, Granny Shan, I shall take these back with me. As for the payment... Well, allow me. Hey, it's Child! हेलो 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 आवाज आ रही है हाँ तो आती हूँ हे आई एम बैक अगेन कितना देर लाइव करते हो मतलब जो चल रही No, I was merely passing through. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. He knows a great deal about money, and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him. Or perhaps you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the next step in our preparations. The rite of parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people near the harbor. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know what I mean. दोस्त या मॉडरेटर से हाँ तो बात तो करी थी लेकिन Seems I डिसीजन missed out on तक some नहीं आया interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. हाँ वही बात है I'll catch
catch up. Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. Adventure? Venturing into the mountains to capture a few crystal flies seems adventurous enough. Eh? That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Never mind. I'll only charge you 15,000 Mora. What say you? A most fair price. A pleasure doing business with you. Fair price देख लिया भाई fair price. A full day of odd jobs at Eugene Terrace. No problem. 25,000 per day. A fair trade, yes? Whoa, that's expensive. Could you give us a bit of a discount on account of the whole Hero of Mondstadt thing? Neuvillette. Hero of Mondstadt? Never heard of them. Well, you may never have heard of this hero. But it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay the whole sum. Hey, that's a good price. Anyone would work for this much, Mora. आपका मॉड चैट में है, आपको दिखा नहीं रहा। किन चैट में? वाव, मेरे को दिख ही नहीं रहा है वो। चैट में आके वो बैठा हुआ है। Oh, मेरे को नहीं दिख रहा। Sure. फायदा उठा लिया उसका। I, Tick, always put in 100% effort into everything I do. Of course, there'll be a premium if you want me to give 110%. So what's the job? Let me see. We are still missing some wooden implements over at Eugene Terrace. They aren't uncommon objects, so I didn't make any special preparations for them. टाइम लगता है, देख लो अपने हिसाब से। क्या बातें हो रही हैं? उसका चैट तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। That'll be 20,000 Mora for a single trip. How does that sound? sound? करो, आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाओ, डिस्कॉर्ड पे डिस्कशन कर लेते हैं। लिंक मैंने दे रखी है डिस्कॉर्ड की, आप ज्वाइन कर लो। This is all you got? Then no can do. Child? No. He's putting up the money? Oh, still no. Wouldn't that mean I have to make 2 trips rather than 1? How about this? Let's make a trade. I'll take what you're offering right now, and get me a single Chinxin flower, and I'll consider that payment for a detour to find this child fellow. How does that sound? Guess we've got no choice. Have you brought the goods? Hey, that's pretty good. These things are pretty rare, and I have no idea where I'd find them. With this Chinxin flower, I should be able to pacify my daughter tonight. I'll make sure the work is done before I return home.
Whenever you need me, I'll be there. Someone needs assistance. All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go unrewarded. You think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is coming. Well, how does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half an hour. What info do you need? Does that mean you know what he's after? Yikes! You're right! Signora! You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Just what is this about? The atmosphere got so tense all of a sudden. Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of... Is everything okay? Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus Mora. Now, if you'll excuse me, I must be going. Paimon definitely felt like Child wasn't happy with us just now. इसका अलग ही है. नहीं जिंदा है. ट्रोल कर रहा है मेरे को ये. हाँ तेरे को तो मजा ही आएगा ना, फिर तो ठीक है नाना. तो Leave it to me. All of it. Whatever it is. What exactly is it? I didn't quite catch your request. क्या सिस्टम है? आपको अपनी मॉड की चैट नहीं दिखती, पता नहीं क्या हुआ है.
उसकी चैट ही नहीं मेरे को दिखती है। वो जब तक दूसरा अकाउंट से नहीं ना आएगा तब तक चैट नहीं पढ़ पाऊंगा मैं उसकी। नहीं, अगर बाई चांस अगर उसको कुछ काम होगा, मोड नहीं है भाई, मॉड है मॉड। किन है किन किन। रिया 1760 की है मॉड। क्या है बे 1760? 1760 अच्छा से बोल। You seem tired. मेरे को Would नहीं you पता like क्या some चल रहा है tea? यहाँ पर। I'll brew you some. Do you take sugar? 1 cube or 2? मैं समझा नहीं पाऊँ। गॉड को एक और गिफ्ट दे दो। मांगने आया है लोल। क्या कह रहा? क्या कह रहा है? बोल। निसी हेलो हेलो। Someone needs assistance. I'll catch up. न्यूविलेट का बैनर 20 दिन तक रहेगा। कौन सा नशा क्या है, गिफ्ट पे गिफ्ट दे रहा है। अभी ज्यादा मतलब तेरे को और गिफ्ट दूंगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गिफ्ट मांग रहा है मेरे से, देता हूँ इसको 24 घंटे का गिफ्ट। हर 24 घंटे मतलब हर मिनट एक गिफ्ट जाएगा इसको। The reception is deserted. And it seems kind of spooky in here. Hello? Is anybody there? Welcome नहीं उसको to मैंने Pubg ज्यादा का नहीं 10 Pharmacy. मिनट का गिफ्ट दिया। वो बीसी में बैठ के भाई ये क्या कहते हैं, Where did it come from? ये कर रहा है। The reception, it seems. क्या बोलते हैं, स्क्रीन शेयर कर रहा है वो बीच में बैठ के। Go check it out. And Paimon will bring up the rear. बताओ। बुला दिया मैंने उसको ऊपर। बुला दिया भाई। लगता है किसी ने खाना नहीं खाया, नाखून चबाया जा रहा है। गेस करो कौन है। नहीं, सन ऑफ गॉड नहीं। Oh, there you are. But you can't even reach the counter. She is a zombie. Ah, Paimon thinks you might be right. Look at the talisman on her forehead. Welcome to Boo इंग्लिश नहीं Pharmacy. आती तेरे को? I am Chi-Chi. Once upon a time, Chi-Chi मैंने बोला died. she is a and zombie. Chi-Chi was saved by the Adepti. तेरा कान खराब है या तेरी फोन का Now, माइक खराब है भाई? Chi-Chi is a zombie. Something like this would be unimaginable in Mondstadt.
भाई मेरा बोलने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है पर little समझ girl. जाया करो. Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? भाई ये चीची के बाद बिल्कुल मेरे नीसी की तरह लगती है मेरे को. Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. एकदम It's slowly not a पेज में बोलो controlled ना, मतलब substance. जैसे थकी हुई रहती हो ना उस Chi-Chi तरीके से can बोलो get ना your बात की तरह medicine. लगेगी. But only if you show Chi-Chi your prescription. These are Chi-Chi's orders from Chi-Chi. निन्नी नाना. बहुत क्यूट रहती है. मैं अच्छा रुको मैं जापानीज में करता हूँ देख ले. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. My dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. तो क्या अब But we do hope decision that you लिया, can still help us अब find तो some everlasting आपके incense. mods भी Okay then. हैं. How did you manage that? But क्या Chi-Chi करूँ? helps you. 10वीं फेल हूँ ना. You help Chi-Chi. Only fair. Since when do customers need to do favors for customer service staff? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way everybody wins. Sometimes in Liyue, the art of the deal is simply about victory via mental gymnastics. Go to Mount Tianheng. Find the Guizhong Ballista. And hunt a cocoa goat. Please and thank you. Guizhong Ballista. I have heard of this वैसे device वैसे मैं सीधा before. से बताऊं मैं चाहूं तो It's a सबका कर kind of सकता हूं. crossbow मेरा दिल turret बहुत बड़ा है. वैसे नहीं मैं एक installed on करूंगा Mount एक नहीं करूंगा. Chinhong by an लेकिन उसके adeptus ऊपर है of the भाई. distant वो मेरे से past. ज्यादा डिमांड करेगा An तो मैं early कुछ भी नहीं mechanical करूंगा. device. Located in Chenhung Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. Mr. सब Zhang सबके Li अकाउंट में 2-2 really घंटा knows फार्म कर Liyue दूंगा. inside out. Apparently not quite. Oh. This is the first I have ever heard of the Cocoa Goat. 12 घंटे का लेकिन चार्ज The लगेगा cocoa ना. goat is a legendary animal. An adeptabeast. Did you want to add anything else, or...? No. Just that the cocoa goat is a legendary animal. An adeptabeast. What it looks like. Don't बड़ा know. दिन में पैसे ही रखने के Where लिए to तो बड़ा find कर it? रहा हूँ. Don't know either. Where it came from? Also don't know. Very well then. चीची कितनी Let's स्लो start पेज by में बोलती है. investigating near the Guizhong I Ballista. don't know. Perhaps we will find some clues. इसको मारा किस? What the heck is a cocoa goat? यक्षा यक्षा. ओ भाई so sad यार. मैं जापानीज में वॉइस करता हूँ देखने. तो मना करना चाहिए ना आपको कि बीच में नहीं जाओ. Game language, voice over language, no. वॉइस ओवर लैंग्वेज नहीं डाउनलोड है. वाह, करा था मैंने. Whenever you need me, I'll be there.
वापस बैठे गाना गाया जाता है वो। बोलो तो सॉसवाय कर देंगे, लेकिन टाइम लगेगा, यही बात है। बताओ। जोमेटो करवा दूं? जोमेटो, यस। वो चार्ज तो खुद ही देना पड़ेगा ना मेरे को, वो कहाँ से देगी भाई? बस एड्रेस बता देना। और साथ में नंबर भी देना पड़ेगा ना, कि डालना पड़ेगा वहाँ जाके डिलीवरी बॉय कॉल कॉल करे। ओए फुल्ली दम, मतलब क्या बोलते हैं हम, बैकअप प्लानिंग बैठा के रखा हुआ है। हाँ तो लेकिन अब कुछ लोग होते हैं साले चिपकू, नंबर लेकर के भाई कॉल करते रहेंगे। वो नंबर तो बैकएंड के लिए था। बहुत स्मार्ट हो यार, इतना दिमाग कहाँ से लाते हो? मतलब जब जब भगवान दिमाग दे रहे थे सबको, तो तुम सब कटोरा लेके जा रहे हो, तुमने मतलब पूरा, मतलब क्या बोलते हैं, थाली लेके। हाँ। अबे तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है भाई? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? ये मेरे पीछे क्या लेके गया था क्या? चम्मच नहीं भाई, तू तो मेरे ख्याल से तू पूरा ट्रक लेके गया हुआ क्या? 1000 लोग का दिमाग अपने पास रखा होगा तू। It's huge. Paimon can totally believe it took an adept to build this. But how do you operate this thing? दिया मैंने, think how much टैग कर दिया strength you would need. What the? It is Chat में currently link ये inoperable in होगा। any case. This device is broken. Aw, what? It broke? After millennia of wear and tear, even Adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna Invalid do? लगा था। अच्छा expired हो गया। Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers. You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on इनको ने ये demand. बोला, ये लिंक बनाया था ना, That ये लिंक कभी said, एक्सपायर नहीं होता। let me think for a moment. बोला था उसने। Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong ballista. One just needs to understand the basic working principles of the device. नहीं तूने नहीं बोला था ना वो वहाँ से भेजो, तो वहाँ से भेजने का ट्राई करा, वहाँ से You एक्सपायर हो actually गया। understand the working principles? I have a smattering of knowledge on the topic. With the parts in hand, I could at 7 least days, tinker with it. None, low, no limit. आ गया क्या? नहीं अभी नहीं। आप किसके हाथ से पुल कराने वाले हो? ओ माविका मम्मी चाहिए।
These parts look useful. One moment. I will try to repair the device. It is done. The Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Ooh! Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. Over here we have nothing. And over there, more nothing. Hey! Just what do you think you're doing? So you fixed up this turret because you're planning to do what, exactly? Not a turret. A Guizhong ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Ha! Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. This area's supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it! The next thing you'll be repairing is your faces, and that's if you get out of this alive! Tut tut. Vandalizing the legacy of an Adeptus for selfish gain. Disgraceful behavior. It is not we who need reprimanding, but you. There's no end to this. I must leave no stone. Don't get frostbite. Dodge this. I'll protect us. Huh? Someone needs assistance. Cool it. Want a taste of my hammer? Dodge this. Steady as stone. Let's dance. Huh? I must leave no stone unturned. I messed up. Freeze. I'll protect us.
Ah, these parts look useful. One moment. I will try to repair the device. It is done. The Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Ooh! Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. Over here we have nothing. And over there, more nothing. Hey! Just what do you think you're doing? So you fixed up this turret because you're planning to do what, exactly? Not a turret. A Guizhong ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Ha! Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. This area's supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. Last time we approached, skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it! The next thing you'll be repairing is your faces! And that's if you get out of this alive! Tut tut. Vandalizing the legacy of an Adeptus for selfish gain. Disgraceful behavior. It is not we who need reprimanding, but... Cool it! This moment will be frozen in... Let's dance. Ready, steady, go! Everybody stand back! As a good knight should. बस यूं ही ऑन करके अच्छा लगा चैट में क्या हुआ अभी तक सही नहीं हुआ था कर लेना भाई क्या कर 1 मिनट रुक जाना मैं फाइट कर रहा हूं Let's light it up! I'll catch up. बता चैट क्या था Someone needs assistance. Freeze! Oh. Oh my roast again. Oh भाई किन को क्या ही रोस्ट करा गया किन को क्या ही चैट पढ़ने के लिए मैं बोल दिया गलती I missed a spot. Leave it all to me. Freeze! I'll protect it. No. Oh, so sorry. What's the hurry? क्या जल्दीबाजी है भाई Steady as stone, as a dutiful maid would. अबे वो चैट में आया था उसने ऐसी बात की ना भाई मैंने उसको 10 मिनट का बैन दिया यही गॉड ऑफ Dodge this! Let's dance. Freeze!
रहा है भाई मेरे को रोक। एक्चुअली बताऊं तो मैं बहुत सेंसिटिव इंसान हूं यार, मेरे को रोज रोज सहन नहीं होता। Leave it all to me. वो सब कुछ बचपन में कुछ Don't push your luck. Dodge this. Fry. Freeze. अबे उसको टाइम बैन दे तो कोई गॉड को 24 घंटे का देना तो मैं ही देता हूँ। रुक जा फाइट। What's the hurry? बहुत हो गया भाई। This moment will be frozen in time. Dodge this. बहुत हो गया यार, बहुत जीत लिया अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। Steady as stone. Come on, we can do it. हाँ तू मॉड है। वो वाला उड़ा दूं क्या? Leave it all to me. वो वाला भी मॉड है। Time to clean up. दिल पर आने वाली बात ही नहीं, ये तुम को और लेके जा रहे हो भाई। दिल पर आने वाली बात होती तब ना, तुम दिल छोड़ के बाकी सब जगह जा रहे हो। मैं बोला ना मैं थोड़ा सा सेंसिटिव इंसान हूँ, मेरे को नहीं होता बर्दाश्त। ट्रोलिंग चल रही है। I must leave no stone unturned. देखो मैं तो इतना बोलता हूँ कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन जिसके भी स्ट्रीम में जा रहे हो उसको किन समझ के मत जाना पिघना। क्योंकि मैं गाली वाली देता नहीं हूँ, ठीक ना, प्लस मेरे को गाली सुनने की आदत भी नहीं है। भाई कितनी मेहनत करनी पड़े यार। These lowlifes didn't know who they were messing with. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus on our contract with Chi-Chi. Oh yeah, that! So we've got the Guizhong ballista working, but where's our coca goat? A search using the Guizhong ballista revealed no significant life forms nearby, save for the usual wildlife. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast, as Chi-Chi put it. Which means... मैं गाली नहीं बोलता, बस थोड़ा मजाक करता। दक्ष को पूछो वो मुझसे कितना कुछ बोलता। मेरी चैट मिस आ गया, ड्रैग कर लिया उसने। ये लोग नहीं मानेंगे ऐसे। Paimon wouldn't go that far. We did something positive, right?
We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy. Explain that we could not find a cocoa goat, and review our next step. Good idea. We did our best, and that's what counts. कौन है वे? जापानीज देखते हो पर गाली नहीं देते। हाँ, जापानीज में गाली देना होता है क्या? I'll catch up. Someone needs assistance. जापानीज मतलब जापानीज समझ जाओ यार। वो तो नेचुरल चीज है ना, गाली नेचुरल चीज नहीं है। We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the cocoa goat adeptabeast of which you speak. What a disappointment. Don't worry about it. But I feel very disappointed. तो वो देखते हो भाई, क्या डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर? मेरे को कोई समझाएगा? वो क्या होता है वो? लेवेंडर स्वीट 07 हाय, हेलो भाई, हेलो। कुछ है तो अच्छा लेमेंडी हफ्ते में कितना बार देखते हो? डेली भाई, डेली पर डे। Cocoa goat milk is tasty. So tasty. एनीमे फुल एचडी में Much better than normal goat milk. हाँ, पूरा पोल खोलो मेरा। Only an adeptabeast could make such साथ में ये लोग भी जॉन रहते हैं। I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. That's why I wrote it down. Where did I put it? Ah, here. This is the name. Coconut milk. Huh? I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Liyue proverb goes, all things are random and, so how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? अरे हुआ क्या? इनसे हुआ क्या बता? Sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. Huh? Huh? No. Impossible. फिर? Seems Chi-Chi took this pretty hard. Oh. Someone learnt a valuable life lesson today, then. Thank you all for looking after my little Chi-Chi. Might I ask who? Direction de raha tha wo ऐसा. How rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Paimon thought Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. What a sorry state of affairs.
This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. Ah! The snake is speaking! I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent! Don't mind Chung Sheng. She's a good girl, really. As for Overflow you ऐसे बताना किसने communal देख रखा है। chaos causing with Chi-Chi aside, what business brings you here? Do you sell everlasting incense in this fine establishment? नहीं मैंने भी नहीं देख रखा है रिव्यू चाहिए था ना मेरे को कैसे है At last, things are finally starting to come together. 3 million Mora. Top quality. Guaranteed. ऐसी बात है क्या कुछ ज्यादा ही खतरनाक है नहीं एक्शन वैक्शन है कि नहीं You might as well just rob the Golden House. Oh, but the Cheesing have taken it over for now. Security will be tighter than usual. 3 million. नहीं An नहीं innocuous मैं वो number कह in रहा and of हूँ देखने का itself. देख लूँगा Though लेकिन एक्शन practically वैक्शन speaking, स्टोरी it कैसा could है be ये a तो hard बता दो sum to come by. It's a crazy number. We'd never be able to make that much more. And as for Mr. Zhongli, he's around 3 million short. This is correct. बाथरूम में क्या एक्शन होगा बात कवर्ड में डाल के कवर्ड में मुंडी डाल के क्या मारता है What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to child? Coco Goat! Coco Goat! My sides भाई hurt. किसी चीज Oh को my जान goodness. के भी I अनजान cannot बनने का जो believe you मजा fell रहता for है that. Hey, less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. लोगों को लगता है कि In मैं return, मासूम हूँ I'm more than लेकिन happy वो to sort मासूम out है this mess you've managed to get मेरे को yourselves समझा रहे into. हैं Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the जो Fatui मेरे साथ जा रहे Harbingers. हैं भाई Forgive my audacity, but I see a great many जो opportunities लोग for us to बोलते हैं वही लोग collaborate in रहते the हैं वही future. सबसे बड़े इनोसेंट If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a सही में robust and speedy distribution network. Strange. क्रंची रोल का I knew सब्सक्रिप्शन the ले रखा होगा Fatui infiltrated इन्होंने businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? 80 रुपए का तो है Coconut milk. 80 रुपए का है भाई 80 Baiju, रुपए quick. Chi-Chi wants coconut milk. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000 मैं भी हूँ more. बड़ा इनोसेंट वाह गॉड ऑफ सन भाई सन ऑफ गॉड गॉड ऑफ सन बोलता हूँ गॉड भाई सबसे बड़ा इनोसेंट बंदा भाई सन ऑफ गॉड सबसे बड़ा इनोसेंट Also, well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. किसका? Child, Dr. Baiju, little Miss Chi-Chi. नहीं See नहीं you भाई मैं soon. सब फ्री वाले देखता हूँ हाँ पैसा कौन देगा भाई That lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope. What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House? ML में If not the Exuvia. क्या बोल रहा है I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Leo saying goes, the walls have ears.
मेरे को तो वो वाली रील आ गई जो एक लड़की पूछती है ना आपने I'll catch up. कौन से महीने में जन्म हुआ है भाई Someone needs assistance. क्या हो रहा है यहाँ भाई I'll catch up. Well, as it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting incense. The completion of our preparations is not far off. Finally! Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? Odd. Which is it, I wonder? The questions that such travels raise are ever so complicated. क्या कह रहा? Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. गाना चलाने का As नहीं है, to नहीं है remuneration for your help, I've decided to treat you to a meal. ओए, ये तो मैं चलाता हूँ एक गाना लूप देख लो Oh, yes, don't worry. अरे I वो will remember to bring समझो more ना this एक्स और time. विशेष दो गाने को मिक्स Tonight, करके I shall बनाया हुआ take you both है to जिसका an old बुलबुलैया hole in the 3 में wall, praised ऑफिशियल throughout Lyon. ये क्या कोलैब भी हुआ ऑफिशियल कोलैब हुआ तो वो अनऑफिशियल कोलैब था ये ऑफिशियल कोलैब था Indeed. Let us meet near the harbor at third round knockout. हो भी सकता है भाई होता तो बहुत है लेकिन पता नहीं होगा तुमको वाह भाई Ah, you're here. There's no need to order. I've already done so. Third round knockout is not for lightweights, like those taverns in Mondstadt. Here, the owner does not take such unorthodox orders as fruit juice. I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you, if that counts. If it is to your liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguan's Jade Chamber. Hey, there's even a storyteller here! Great atmosphere! Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well loved. But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Tevat travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. What does it mean to have all-seeing eyes? This, my friends,
Lady Ningguang's masterwork that bridges earth and sky. Imagine, the weather is clear, and you gaze down from the deck on the world below. Behold, the glorious sights of Liyue Harbor, stretching out far and wide. They say that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Why brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. Merely grasping 1 or 2 of them will surely gift you a fragment of her wisdom, enough to stay a step or 2 ahead of your peers. Tianquan Ningguang. Feels like we're hearing this name a lot. Liyue locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the Exuvia, and we saw her at the Rite of Dissension. Huh. Paimon wonders what sort of person she is. At last I have found you. You who returned from Jueyun Karst. Who's there? Wait, I am not with the Millelith, nor am I here to claim your bounty. However, I am an emissary of the Liyue Qixing. My name is Ganyu, secretary at the Yuehai Pavilion, and I have come specifically to meet you. Well, in concrete terms, I am the corporate secretary for the Qixing. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's special emissary. Ningguang sent you? We were literally just talking about her. My apologies, you who have returned from Jueyun Karst. I am duty-bound and cannot extend my courtesy to you in full. But I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianquan. She invites you to her palace in the sky. An official invitation? Lady Ningguang said this. Invite her to come here. I wish to meet her. At the Jade Chamber, together we shall snip every one of these entwining dark threads. And with that, the emissary who called herself Ganyu just disappeared. But we've received an invitation from the Liyue Qixing. Paimon still can't believe it. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed.
You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you've finished at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. Don't worry, we won't forget. Dihua Marsh. We'll see you there. Listen, let me tell you To how our it success. is. Need another handsome sum today? Leave it to me. All of it. Whatever it is. What exactly is it? I didn't quite catch your request. A toast to our success. Made another handsome sum today? Listen, let me tell you how it Whenever you need me, I'll be there. A toast to our success. Someone needs assistance.
it to me. All of it. Whatever it is. What exactly is it? I didn't quite catch your request. Whenever you need me, I'll be there. You seem tired. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? 1 cube or 2? Whenever you need me, I'll... You seem tired. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? 1 cube or 2? Whenever you need me, I'll be there. स्ट्रीम करता हूँ, तुम्हें से पूछ। तू जा आराम कर, आराम से जितना टाइम लगेगा उतना टाइम ले। अकाउंट रिव्यू के अलावा सब करेंगे भाई, ठीक है? कोई भी कुछ ऑफेंसिव नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है। मेरे अलावा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मैं भी नहीं बोलूँगा। अगर चीटिंग करता है अरे नहीं कर रहा हूँ भाई, नहीं कर रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम लोग ऑफेंसिव बोलते क्या हो? मेरे को तो ये भी नहीं पता। मैं तुम लोगों के सामने, मैं अपने दोस्तों के सामने बोलती हूँ। ठीक है। अरे भाई ये क्या है? मैं वैसे अच्छा, किसी और ने ऑफेंसिव तो नहीं बोलती, बट मैं कहा अहम भेज दिया। अरे कोई नहीं, भेज दिया है वैसे। ये रिया कौन है? रिया है सब्सक्राइबर शॉर्ट बॉय की भाई। पेटीएम कर रही है, उसको बता।
तेरे वाह को क्यों जानना है रिया कौन है? तेरे को क्या इंटरेस्ट है? उससे भी एज पूछेगा क्या कमल? नहीं नहीं मंथ, नहीं, लड़कियों की एज महीना पूछते हैं। महीना पूछेगा भाई, महीना पूछेगा। महीना इससे थोड़ा पूछेगा। नोवेल मेन। अरे नोवेल मेन तो है भाई, शॉर्ट बॉय भाई। एक सेकंड, आवाज जा रही। भाई, नोएल के एल ई के बीच में थोड़े वी यू भी आ जाते हैं, लेकिन हाँ, नोएल मेन है वो। देखो हेलो नाइट बॉट चल रहा है भाई। साला ये नाइट भाई बॉट, यार अभी मैं हेलो डालूंगा, मेरे को अगर रिप्लाई नहीं करना भाई, सही बता रहा हूँ मैं अभी एकदम। अभी नहीं करेगा तू, यो लिख के भेज एक बार भाई, शायद क्या पता कर जाए। वरना शॉर्ट बॉय का नाइट बॉट भी हम लोग से चिढ़ता है आजकल तो। मेरे को एक सेकंड, मेरे को अनमॉड कर दिया इसने। हाँ वो तो मैं बोला ना इसलिए तो क्या। काय को? हाँ, तू आता नहीं है मॉड, वॉच टाइम जितना थोड़ा बहुत मिलता है वो भी काउंट नहीं होता तेरे कारण। नहीं, मॉड के काउंट होते हैं, मैनेजिंग मॉड के काउंट नहीं होते। दोनों के काउंट नहीं होते। कोई नहीं। अभी 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 शॉर्ट डेस्परेशन में है वॉच टाइम के, तो वही तो। थोड़ा रहो। अभी उसको सब्सक्राइबर तो मिल रहे हैं, वॉच टाइम कहाँ से मिलेगा? भाई 22 लोग देख रहे हैं, 22 लोगों ने लाइक किया है भाई, और लाइक कर दो 8 लोग, मजा आ जाएगा, एकदम से 30 लाइक हो जाएंगे। तो मैं फिर से बोले, दबा के लाइक से ठोक दीजिए माँ का के नाम से, एक दो चार लौंडों के लिए नहीं है यहाँ पे। अबे सालों, मॉडरेटर लोड का स्टार्ट कर वॉच देते हैं। टाइम काउंट होता है, लेकिन मैनेजिंग मॉडरेटर का नहीं होता है। भाई सुनना, ऐसा कुछ नहीं होता, मैनेजिंग और मॉड दोनों सेम ही है, ठीक है, बस थोड़े बहुत प्रिविलेज ऊपर नीचे होते हैं। मैनेजिंग मॉड नॉर्मल मॉड का तो टाइम आउट भी दे सकता है क्या? तो वही एक चीज तो है, पहला वो चीज, दूसरा ये चीज होता है कि चैट की सेटिंग्स चेंज कर सकता है वो, बस और कुछ नहीं। दक्ष को गिफ्ट दो। अरे दक्ष तेरे को गिफ्ट चाहिए क्या? शॉर्ट बॉय बोला है सबको गिफ्ट दे के जाना आज। भाई दे दे भाई, मैं दे खुद दो भाई दस सबको दस कुछ। के 10 सेकंड का गिफ्ट, 1 सेकंड का, 1 मिनट का, सब सब टाइप के गिफ्ट दे रहे हैं आज। 24 बस यार नाम लो गिफ्ट आज, चाहिए ही नहीं। मैं गिफ्ट देने के लिए बैठा हूँ मैं आज। अकमल को दे। गॉड को तो भाई 24 लाइक घंटे करने का बोला, मिलेगा। सच में 2 लोग लाइक कर दिए भाई। मतलब ऐसा नहीं कि वापस ले लो लाइक, अच्छा थैंक यू लाइक करने के लिए, शुक्रिया आपका। भाई एक सेकंड, शॉर्ट बॉय 5 घंटे से स्ट्रीम कर रहा है। भाई शॉर्ट बॉय आजकल रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तेरे को क्या पता? ब्लैक स्क्रीन। अब मेरी आवाज जा रही कि नहीं, एक बार चेक कर तो अकमल। आवाज जा रही है जा रही है। जा जा रही रही है है, ना? लेकिन वो शॉर्ट बॉय का गेम गेम बंद हो गया है। हाँ स्ट्रीमर भाई नहीं, अभी आ रहा है 10 मिनट। ब्लैक स्क्रीन ब्लैक करके गया है वो। तो ब्लैक स्क्रीन भाई देखो यार तुम। ब्लैक स्क्रीन की चिंता मत करो भाई, आप बस ऊपर जो चल रहा है ना ओवरले में, ऊपर आर्कॉन्स को देखो आप। हाँ, अब बाकी हमसे बात करो। बाकी हमसे बातें बोलो हम करो बात आप। कर रहे हम कर रहे हैं बात, बहुत अच्छी बातें करते हैं हम लोग। यूआईडी बस दे दो, आपका रिव्यू रिव्यू नहीं करेंगे, बस रिपोर्ट मार के आ जाएंगे। नहीं नहीं, ये रिव्यू करेंगे ये। ये था आज का सबसे ऑफेंसिव जोक। मैं देखो, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं किसी की लाइव में कुछ ऑफेंसिव जोक नहीं मार रहा। कल हाँ तो भाई तू इसके आ लाइव तो, में क्या बोल रहे थे आ तो तो देखा हमने। लंबा वाओ बड़ा, तुम आओ भाई, तुम आओ एक आध बार डिस्कॉर्ड में सुनो स्पीक सुनो करना मत। सुनो सुनो ना, मेरे को नहीं पता था कि लाइव में आवाज जा हाँ रही है, हाँ। ठीक है। नहीं नहीं भाई नहीं ना वो भाई। सब परमानेंटली बता दो। जाएगी भाई। ना फाइन, ठीक है भाई उसकी ठीक है। कैन के लाइव में जाती है डेली आवाज। वही तो भाई, मैं बंद भी ये नहीं तो कर ऐसे बोल रहा सकता है ना भाई, ताकि। ये कमल तो ऐसे बोल रहा है जैसे फर्स्ट टाइम आया भाई यहाँ डिस्कॉर्ड में और कन की लाइव में, तो पता ही नहीं है। वही तो। भाई कभी कैन बंद रखता है, कभी कैन चालू रखता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं रहता कि हमेशा चालू रखता है या हमेशा बंद रखता है। हाँ। मैं बंद वो रख ही नहीं हमेशा सकता, चालू है। मेरे पावर में है ही नहीं बंद रखना। हाँ वही तो। अरे ये लड़ते रहेंगे भाई। इमोर्टी भाई आप बताओ भाई, सब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया? चैट से और एंगेजमेंट बनाओ खाना हो यार गया? रिया। ये कैसे? खाना वाना हो गया भाई मोटे भाई? अरे खाना पीना तो हो गया होगा भाई, ये बताओ भाई, गर्लफ्रेंड बनी लड़की कि नहीं मिली कि अभी नहीं तक मिली? आप? बहुत, कितने कितने साल के हो भाई आप? हाँ पहले साल बता दो भाई, पता बाद में मतलब मैंने निकले यार 14 हाँ साल भाई के। आप नहीं नहीं नहीं, इमोटी भाई आप अपना एज और मंथ बता दो बस। माविका मिसिंग। अकमल का माविका काम तो हो मिस कर जाएगा। दो यार। माविका। अकमल गे है? अरे यार। अरे, हाँ 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 वो है।
नहीं अच्छा है, नहीं है, एप्पल गे नहीं है। नहीं तो है लड़का भी चलेगा उसको? मैं नहीं बोलता भाई। वो तो भैया कौन से पूछो। हाय बर्गर इनाजुमा मैकडोनल्ड्स। अरे 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 भाई बहुत सही जा रहे हो यार। और राइडन शोगन आती है क्या मैकडी खाने? वहां नहीं आते, राइडन वहां के पे मैक तो आता तो है। भाई टेस्ट करते होंगे। राइडन का बन तो अलग ही टेस्ट करता होगा ना। बहन के भाई थोड़ा सा देख के। अरे राइडन में कर रहे। बन ही तो बोला है मैकडॉनल्ड का बन यार। वही तो। ना ना ना, मैकडोनल्ड का तो नहीं बोला तू। हाँ तो उसने लिखा ना इनाजुमा का कहता तो राइडन ओनर होगी ना, तो उसी का यहाँ का तो बन हुआ। मेरे ख्याल कैसे? से अगर अरे मैक आइंस्टाइन हरबन भाई कैसे हो? व्हाट्सअप मैन। मैम। मैम। मैम लिखा भाई इसमें। अरे निशी ये चालू ब्लैक एंड व्हाइट तुम्हारे लिए था। हाँ क्या क्या? व्हाट्सअप मैम पूछा है, आ जाओ चालू हो जाओ। कौन मुझे? हाँ कोई तो आया भाई आइंस्टाइन नाम से। मैम। नहीं नहीं, आपसे मैम पूछना है तो एक ही है। क्या हालचाल। आई डोंट थिंक सब मुझे बोल रहा है। साइन का स्टूडेंट का अच्छा। व्हाट्सअप मैम बोला है। नहीं, मेरे को एक बात बताना, यहाँ पे चैट में अभी डिस्कॉर्ड में जो लोग हैं और मैम कौन है? कोई एक मैम अच्छा नहीं मुझे है? बोल निश्चित के रहे। अलावा तो कोई हेलो नहीं। हाय। पता साइंस नहीं का क्या है। student है। ये मेरे को कोई व्हाट्सएप पूछता है मैं क्या जवाब दूं, मेरे को वो लगता है फिर। बोलो ओनली डिस्कॉर्ड। अरे सब बढ़िया, आप और बताओ बस बात बताओ। नो व्हाट्सएप। आइंस्टाइन आशीर्वाद दीजिए, सही है भाई। नहीं अपना आईक्यू शेयर करेंगे तो बोल दो आइंस्टाइन। हाँ क्या चल रहा है बिड़ लोग? आई एम हियर। आ गया हरामी। आ गया। रामी किसको बोला कूद रहा? छोटे लड़के को। बे गाली कौन दे रहा है तेरी ऐसी तैसी? आइंस्टाइन आशीर्वाद दीजिए भाई, एंगेजमेंट बढ़ा रहा हूँ शॉर्ट भाई, आधा एंगेजमेंट बढ़ाते तेरे चैनल का। लॉगिन कर लो। आईडी सेंड कर दिया क्या? हाँ हाँ जाके चेक करो। आईक्यू हो तो आप जैसी। अरे भाई कुछ नहीं भाई, आईक्यू बहुत कम है आइंस्टाइन की। डिवाइस कौन सा है? डिवाइस है भाई एप्पल प्रो मैक्स। नहीं मैं थोड़ा अरे सा कहाँ। स्क्रीन स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक ना? फिर से बोल, स्क्रीन फिर से ऑफ कर रहा हूँ। मतलब हाँ, मतलब ऑफ वो गलती से हुई थी, ऑटोमेटिक हुई थी, मैंने नहीं करा था। ठीक है, हाइड करके गया था भाई नहीं गलती नहीं से। झूठ नहीं बोला, गलती से अरे हुई तू थी। कर, लॉगिन कर लॉगिन कर लॉगिन कर। जीमेल चेक करना पड़ेगा, जीमेल है नहीं मेरे पास, क्रोम में जाके देखना। फोन में है, फोन में। जीमेल मतलब जीमेल के ऐप ही नहीं है मेरे पास। आईफोन है, सॉरी। भूल जाता भाई, गरीब हूं ना मैं। आईफोन गरीबो। तक कभी सोच नहीं पाया मैं। गरीबो। उतना ऊपर तक तो सोच ही नहीं पाया मैं आज तक। वाई टू मूव बेस्ट मूव, वाई टू मूव बेस्ट मूव क्या रहेगा? हाँ भाई, बाय द वे जो भी अभी साला स्ट्रीम पे नए आए हैं सबको मैं बोलना चाहूंगा भाई, तो गलती से साला बोल दिया, सारे जो भी स्ट्रीम पे आए भाई लाइक कर दो एकदम से। 30 लाइक हो जाएंगे अभी। भाई क्या दबा ही के लाइक और शेयर ठोक दे। भाई क्या ही ऐसे दो जीमेल चार एंड बंदों के पासवर्ड लिए है भाई। नहीं थे हम लोग। 30 लाइक हो जाना चाहिए एक क्या बार में। क्या ही क्या कर रहा? जीमेल एंड पासवर्ड है, ये कह रहा था। लीक कर दे इसी बात पे। नहीं नया अकाउंट। अच्छा हाँ तो लीक कर दे इसी बात पे। नहीं shit। अपना क्या रिएक्शन हुआ? चैनल। रिएक्शन चैनल रिएक्शन रिएक्शन चैनल चालू कर दिया। एडिटर है तू। वो भी रिएक्शन क्या पे पता। मीम डाल दूंगा मैं। भाई न्यू अकाउंट, लॉगिन विद न्यू अकाउंट एंड और क्या था? अब से भाई मेरे भी लाइफ में मेरे को लाइक करने के लिए बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सुनते मेरी बात आजकल लोग। नहीं वो मैंने किया है। अरे लेकिन 22 से 28 तक पहुंच गए, और क्या चाहिए? अच्छा एक सेकंड, मैंने किया का क्या मतलब? अभी तक लाइक नहीं किया था? नहीं नहीं देख, शॉर्ट ऐसे बॉय मजाक देख। करते हैं लोग, बोलना मैं पड़ता आज है। तक नहीं किया था। सबकी पर्सनल आर चॉइस है यू भाई, मेल और डॉट? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे आर मजाक यू कर रही हूँ। स्पीकिंग मेरा दूसरे लैपटॉप? मेरा सर लैपटॉप सर से सर दूसरा इसका अकाउंट है, जवाब मैंने मोबाइल से कंफर्टेबल। लाइक किया था। शॉर्ट बॉय, आर यू ये और F2P?
आया मैं F2P भाई। OTP गया होगा बता देना। फोर्स टू प्ले। तो स्कैमर आ गया हमारा स्कैम करने। OTP बताओ, बैंक खाली कर दूंगा अभी। बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा भाई। नहीं तुम किसका अकाउंट लॉगिन कर रहे हो? अरे ओटीपी आ गया चैट में। अबे भाई वन टाइम पासवर्ड की माँ की जय भाई। अरे अब तो ऐसे ही भेजते हैं, ले लो कोई नहीं। भाई मेरे को एक चीज बता रहा हूँ, शॉर्ट्स बॉय को आई थिंक ये दूसरा अकाउंट दे रहे हैं ना व्यूअर्स। कूल। तीसरा तेरा भी गिन ले। मेरा मैं तो भाई मैं नहीं हूँ व्यूअर यार, नहीं देखता मैं। छोड़, वो तो सच में नहीं है तो क्या बात है। अमेरिका में था बट एशिया में नया बना लिया यार। ठीक है कोई, अब एशिया में खेलना है ठीक है। एशिया अबे एशिया में अगर लॉगिन कर रहा है तो नया बन जाएगा। हाँ सेम से भी बन जाता लेकिन From another world? आ जाओ भाई स्टोरी सुनेंगे। अबे एक सेकंड तो व्यूअर के अकाउंट में नया अकाउंट बना रहे हैं? व्हाट? शांत रहे, मेरे को सुनने दे, स्टोरी सुन रहा है मैं। भाई ये क्या ही लगती है भाई, मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है। Your journey ends here. हॉट। इसको पुल करना भाई, इसको तो पुल करना। इसको पुल करेंगे भाई। इसके लिए मैं नहीं करूंगा। इसके लिए मैं एक्चुअली अगर नहीं मिली तो मैं 5000 रुपए वाला वो खरीद लूंगा जेनेसिस। मम्मी मम्मी चैट में स्पैम हो रहा है भाई। देखो भाई मम्मी पुराना हो गया भाई की है भाई। भाई की वाईफी कौन सा पल पैदा हुआ था? क्या लूं बता दो। हाँ लकड़ी। नहीं पूछ ले क्या लेना है। हाँ वही पूछ रहा हूँ। लूमीन। अरे कल्चर्ड, यू आर कल्चर्ड इनफ। कल्चर्ड भाई। ईथर मैंने गलती से ले लिया था, नहीं लेना था मेरे को। नाम क्या डालना है? रुक जा। ल्यूमीन इज मॉमी। मी का नाम डाल देते हैं और क्या। अरे मॉमीन मॉमीन। अरे भाई अरे ऐसे खुले में रियल नेम ऐसा उड़ा देते हैं। रिया एक्स शॉर्ट। अरे भाई फायर्ड रेड ए शॉर्ट बॉय फायर्ड। मैं बता रहा हूं पहले आ गई अब रिया भाई। हाय अगेन। रिया रेस कर रही है भाई। हेलो भाई हेलो, कैसे हो? कौन रेस कर रहा है? अरे जाके चैट पढ़ो यार क्या कर। ओ भाई साहब ये क्या है? We're gonna be a best prince now. अरे यस ठीक है। I have a 265 primos right now. And I lost my power. Wow. So whilst we used to cross world वाह का after क्या world, मतलब है? मतलब न्यू प्लेयर के हिसाब से मतलब लॉट ऑफ प्रीमोस भाई जमा करें बंदे ने। मेहनत करें भाई मेहनत। प्रीमोस पे जाओ मेहनत पे देखो। आकाश से तो ज्यादा ही मेहनत की है भाई। आकाश तो खाली बोलने में मेहनत करता है भाई। कर दो भाई कर दो भाई। और एक बात बता, नया प्लेयर तू जज किया ना। आई एम सेविंग 4 और 1 मिलियन। ओके ठीक है भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हम मैं नहीं बोलूंगा कुछ। यू हैव गारंटी और 50-50। कौन है रे? कौन है गारंटी 50-50? मेरा पूछ रहे हो क्या? 1760 कौन सा वैसे? 1760 आकाश है। 1760 टाइटल हो गया आकाश का। भाई मेरे पास 30 है। फीलिंग्स भाई आप बताओ, आपके 1265 के उड़ा दे तो कैसा लगेगा? मेरे 1760 उड़ाया किसी ने, बताओ। आकाश ने उड़ाए थे भाई। भाई क्या भाई ग्रे बैकग्राउंड में कैन आकाश को गाली दे दे। I have 2 5-star with I did not अबे कॉन्स्टलेशन नहीं है बे। कॉन्स्टलेशन टैलेंट सिर्फ एक है स्वॉर्ड। टैलेंटलेस, कॉन्स्टलेशनलेस, आर्टिफैक्टलेस। टैलेंट बढ़ाने की ट्राई करो। नहीं बढ़ा सकता ना, मटेरियल लगेगी। दबाओ तो उसपे दबाओ ना। क्या लगता है उसमें? क्या मटेरियल लगता है? अच्छा नहीं मटेरियल तो वही लग रहा है अभी, विंड वाला जो था अपना बुक।
अबे शॉर्ट बॉय परचेज कर, मैं पैसा दे रहा हूँ परचेज कर। अरे शॉप भी नहीं खुला होगा बक साला। चल छोड़ कोई नहीं। I have night and got Lini yesterday. अरे भाग भाई अरे। अरे भाई लिनी में पैसा बर्बाद कर दिया यार। अकाउंट फ्लश कर दो आप। लिनी में पूरा पैसा बर्बाद कर दिया यार। चेस का ज्यादा अच्छी थी यार उस भाई हिसाब से भाई तो। चेस का बाजू में थी, थोड़ा बाजू दबा देते यार मजा आ जाता। अरे यार चेस का मिल जाती भाई, बताओ यार एक डिप्रेस एनिमे कैरेक्टर आपके पास भी होता अभी। I have your bow, मेरे पास भी भाई, मोर्टी भाई मेरे पास भी है। दो वो मैं अभी जाता हूँ, मैं भी लेके आता हूँ एक वो। मेरे पास लिनी के दो बो हैं। ठीक है भाई, right after me getting Lini and a few wishes left and I got C1 Lela and they 5-star weapon. कौन सा 5-स्टार वेपन, चास्का वाला के लिनी वाला? आई थिंक लिनी वाला वेपन तो यूनिवर्सल है ना, इसको मतलब हर कैरेक्टर यूज कर सकता है, चार्ज अटैक वाला वो कैरेक्टर्स। एट 5 पीटी भाई बताओ। पीटी वैसे पी और टी के साथ समझ गया था मैं। पीटी पे भी समझ गया था पीटी होता है। स्कूल वाले टीचर निकल जाएंगे पीटी फिर। भाई एक बंदा और लाइक कर दो, 30 लाइक्स होने वाले हैं ठीक है, बस 30 दिखे वहां पे शॉर्ट बॉय का लाइव बंद। जस्ट किडिंग गाइस, अभी भी करवा सकते हैं। शॉर्ट कैन वैसे अब किसी की जल जाएगी, कोई आया था कॉस्ट्यूम में। कौन आएगा? 20 डेलीज वाला ठीक है, वो बोलेगा भाई मेरे बंद करा दिए। क्या बंद करा दिए भाई? मैं भी मैं तो देखो 29 हो गए हैं ना, डेली बंद करा दिए ना। अच्छा एक लाइक और कर दो। किन करेगा गिव इसके बाद? मैं क्यों करूंगा बे नल्ले 30 सेकंड की तो। अच्छा किन तूने कभी क्लिकबेट करा है तूने कभी? बहुत 6 साल से मैं कभी ना कभी तो किया ही रहूंगा। भाई लाने दो मेरा दूसरा अकाउंट। क्या करने दो तेरा दूसरा अकाउंट? लाने दो भाई, लाने दो, गलत मत समझियो। YouTube ले आओ ले आओ ले आओ। भाई YouTube पे नया चैनल खोल रहा है, उसका पहले चैनल पे 100 के हो गए नहीं तो। लियो ये लो 250 251 सब्सक्राइबर्स हो गए अब। 30 लाइक्स भी हो गए भाई, अकमल किया ना। 30 लाइक्स भी हो गए लो। हां भाई लो भाई 30 लाइक्स। चल भाई गिव अवे कर। मैं कहां चलो भाई गिव अवे 250। वैसा नहीं है मेरे पास। अरे बहुत पैसा है, चलो ना। नहीं है पैसे वैसे। अरे कितना फेंकते हो यार। झूठ बोलता है भाई। निशी अब इससे 200 रुपए मांगना खाने के लिए दे देगा। हाँ निशी बोले तो दे सकता हूँ। देखा भाई हम तो भाई लौंडे। मेरे को सच में ज़ोमैटो में कुछ ऑर्डर दे देना। हां क्या तेरा 200 रुपए देना क्या, मैं तेरे को उधार वापस कर दूंगा, देना तो। हां देने दे उधार वाले। उधार नहीं भाई मेरा इंटरेस्ट रेट ही 5% है, तो उधारी कैसे पटाएगा? 5%। भाई बाय द वे इसके बीडी रेज कैरेक्टर आप ही सेलेक्ट करो किसको निकालना चाहिए 5 स्टार में। न्यूलेट निकाल देगा वो, मत बोलो उसको प्लीज। अगले पेज में आने वाला है। कोई मेरा एक्सप्लोरेशन कर दोगे क्या? अरे मैं कर रहा हूं। वो इनसो करेगा, इनसो ग्राइंड करेगा। अरे मैं तो कर रही हूँ वैसे, खुद भी कर रही हूँ अभी वो कंप्लीट। लेकिन एक्सप्लोर क्या किया जा रहा है वो बताओ। सुमेरु है तो मेरे को बुलाओ। नहीं नेटलैंड नहीं कर रहा। तो मेरे को कर दोगे? ठीक है डेजर्ट कर देना। नहीं वो कोलैब कर सकते हैं। कोलैब मैं सिर्फ एक्सप्लोर करने आऊंगा भाई, ठीक है। कोलैब करना तो आ जाना। मैं आ जाऊंगी, मेरे पास हेल्प कर। अच्छा हाँ सॉरी। अच्छा एक सेकंड, आप तुम्हारे यहाँ तो मैं करूंगा क्या? न्यूविलेट एज अरे मैं कॉन्फर्म कराऊंगा, तुम बता देना। फर्स्ट 5 स्टार इज गुड। हां भाई अकाउंट के लिए अरे बहुत यार अच्छा है। न्यूविलेट एज फर्स्ट 5 स्टार इज गुड। आई हैव इनफिनाइट रेज। भाई फाउंटेन तक काम ही नहीं आना। इनफिनाइट रेज वो हेल्थ इस टाइम ना क्या? अरे रेज बोल रहा है बे, रेज नहीं समझा मैं।
रेज नहीं बोले पता? तो short- अरे भाई मिलेनियल, रिज कैसे नहीं जानते आप? नहीं शॉर्ट बॉय मेरे दादाजी के साथ पढ़ा है, मैं बताना चाहूंगा। रेज नहीं पता, रेज मतलब करिश्मा। वही ना भाई। भाई भाई जो चीज नहीं पता नहीं पता भाई बता दो। अब इसमें नहीं पता, अब इसमें बताया कौन सा तो। पार्ट टूट गया भाई? ऐसा अरे हाँ, ये भी दिक्कत है। अब ऐसे करिश्मा का रिएक्शन देते हो ना कि कॉमन वर्ड है भाई, चलते फिरते हर कोई बोलते रहता है, ऐसे बोलते हो यार। हाँ अभी तो कॉमन है। सिर्फ मेट्रो सिटीज ओनली, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, सब जगह नहीं है। अभी पूरा इंडिया इतना नहीं तरक्की नहीं करा है। निश्चित पॉइंट तो उसका भी फेयर है भाई, जब बंदे ने एडमिट कर लिया उसको नहीं पता तो फिर बताना चाहिए ना। वो भी है। बताया तो, करिश्मा का मतलब कौन बताएगा अब उसको? अब ये नहीं पता तो तुम इंग्लिश पढ़ने जाओगे। डेफिनेटली मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे को आती नहीं है। अरे भाई शॉर्ट बॉय और इंग्लिश। हिंदी बता उसको। हिंदी बता। अबे एक तो ये इंजू का दोस्त वो कनाडा वाला आया था, सुबह सुबह एक दिन मैं डिस्कॉर्ड पे बैठा हुआ था, सुनो ना, वो सुबह सुबह बैठा हुआ था, वो आके हाय हेलो कह रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो भाई जो मेरे को इंग्लिश आती थी कटर मटर वही में अरे बात ऐसा करने जा होता है रहा ना, लोगों का चार्म रहता है ना एक। कौन वो C2R2 राइड है ना, सॉरी नाविया वाला। हाँ नाविया वाला, जैसे हाँ। छोड़ो रहने दो, नहीं क्या नाम था? नहीं निक निक। हाँ निक निक, हाँ निक। निक आया था C2R2। बस उसके आगे ना ER लग जाता तो भाई खतरनाक। क्या हुआ? उसके नाम के आगे ER और लग जाता ना तो। We need a translator to understand some chats। ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, निकर बोल रहा है भाई, EL लगाता तो सेंस भी बना लेता थोड़ा सा। देखो भाई ये रेसिस्ट इंसान कैसे खुली लाइव में मैं क्लिप कर रहा हूँ इसको। कर ले। नहीं मेरे को बताना कौन सी अथॉरिटी आ रही है भाई यहाँ से भाई लेटेस्ट तो वहाँ होते हैं सब। आ जाओ अब कर लो। पता है कहाँ रेसेस होते हैं? नहीं हिंदुस्तान में ना भाई, अगर इंडिया में तेरे को नहीं पता कि रेसिस्ट कहाँ होते हैं तो मैं नहीं जानता शॉर्ट बॉय कहाँ होते हैं। हाँ हिंदुस्तान में तो होता है भाई, हिंदुस्तान में तो कौन बोल रहा है कि नहीं होता? वो तो पुराने जमाने से चला आ रहा है। बहुत बहुत भाई, अरे धूप में घूमता है, काला हो गया भाई, बताओ रेसिज्म का पीक है तो। हाँ चल कैन को ही देख ले, वो भी रेसिस्ट है गाइस। मैं तो भाई थ्रू एंड थ्रू रेसिस्ट हूँ भाई। ये तो भाई किसी दिन सामने कोई बंदा आएगा बोलेगा भाई तू मेरे से दूर रह, मैं रेसिस्ट नहीं मतलब भेदभाव कर दूंगा मैं तेरे अपने में भाई। नहीं मैं उनको बोलूंगा भाई नहा क्या। रेसिज्म का डिफिनेशन क्या होता है, मतलब एक्चुअली मतलब क्या होता है? तरह के लाइक और शेयर ठोक दे ये जो लोग भेदभाव करते हैं, मतलब किस टाइप का काइंड ऑफ स्किन कलर, मैं तेरे को बताता हूँ शॉर्ट भाई, मैं तेरे को बताता हूँ। स्किन कलर, उन सब के मतलब ये बहुत ओवरऑल स्टाइल के ऊपर रहता है ना, स्किन कलर या फिर पहनने का तरीका, अच्छे दिख रहे हो या खराब दिख रहे हो। किसका दबाना है भाई? रिया एकदम से भाई देखो कम्युनिटी का काइंड ऑफ कम्युनिटीज, मैं तेरे ट्राइब्स। को समझाता हूँ शॉर्ट पे। अरे यार नहीं अभी नहीं समझाता, कभी अकेले में समझाऊंगा, छोड़ अभी लोगों को बुरा लग सकता है। 5000 लौंडे दिख जाने चाहिए भाई, 5000 लौंडे तो लिखा है, उसको बैन काहे को मिला, हाइड क्यों मिला उसको? अबे ये AK-47 किसकी चालू हो गई? अरे अकमल है वो। Paimon's never seen a stone like this before, so Paimon can't tell what it is. All Paimon knows is that देख it's शॉर्ट dangerous. पे Best we put it away for now. किसी का ऐसे डिस्टिंक्ट फीचर होता है, ठीक है, कुछ कुछ लोगों का। अच्छा जैसे कोई लोग मैं रेस जानता है क्या होती है रेस? हाँ रेस तो जानता हूँ। लोग अलग अलग टाइप के अलग अलग रीजन्स में दिखते हैं, अलग अलग ऐसे वाटर बॉडीज में रहते हैं। वाटर बॉडीज को बोल रहा हूँ मैं, मतलब अलग अलग उनका वो रहता है। तो उस हिसाब से उनको रेसिज्म करते हैं उनकी तरह। जैसे तेरे को पता है कितने अलग अलग हमारे भारत में लोग रहते हैं, जैसे केरला में होते हैं, नॉर्थ में होते हैं, मिडिल ईस्ट में होते हैं, सब में मिडिल ईस्ट इंडिया
सारे चूतिया मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मिड से ईस्ट की साइड। क्या है भाई ये आदमी, इसको रहने दो। भाई तुम मिडिल ईस्ट क्यों? इंडिया में ईस्ट वेस्ट करो ना, मिडल पे मिडल होएगा वो, मिडल ईस्ट नहीं जाएगा, इतना बड़ा नहीं है इंडिया। हमारे हमारे अरे मिड ईस्ट में क्या मिडिल मिलता है? ईस्ट मतलब नहीं समझ रहा तू, मतलब ईस्ट के मिडल में भाई, ईस्ट के ईस्ट ईस्ट वैसे तो नहीं, वैसे तो मम्बल कर दिया ऊपर वाले बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग भी मिडिल में रहते हैं। वही तो बोल रहा है, साइड से है ना, साउथ के मिडल में वो बोलना चाह रहा है, जैसे ईस्ट के मिडल में। समझ जा वही कलर समझा रहा बेस। हूँ। नहीं शॉर्ट में आप मत समझाओ, मैं समझ गया, कैन ने अच्छे से समझा दिया था, वेरी गुड। ओके रहने दो। वो क्या समझाया मेरे को पता भी नहीं। शॉर्ट बॉय क्या बोला बे? वो बोला ईस्ट के मिडल में जो रहते हैं वो मिडल ईस्ट वाले लोग हैं। अरे भाई हूटाओ भाई, हूटाओ। अरे ये मत बोल। Bro using 99.9% of her brain. हूटाओ हेलो हेलो हूटाओ भाई हेलो। अरे अरे वैसे Welcome to the इमोटी भाई stream. रेफरेंस का बहुत अच्छे से इमोजीज का इस्तेमाल करके। Become the very best of friends. इमोटी भाई 10,000 पॉइंट टू ग्रिफिंडोर। ग्रिफिंडोर। Well, look, there's been a large dragon काला sighted सफेद around भाई Mondstadt भाई recently. हिंदू मुस्लिम Best you भाई get भाई। inside the city as soon as possible. ओए मेरे साथ कोई डुएल करेगा? चैट में आ जा, डुएल करते। अगर शॉर्ट बॉय तू हारा I am, but not to worry. I can keep you both अंडी safe while मंडी doing that too. Besides, I जो ये वर्ड बोले can trust you वाला two भी जब just yet. वीसी ब्लेज नहीं किया तो तू है भाई यार भाई वापस से मॉड बना दो यार, एक जगह तो मॉड था मैं। ट्रिगर नहीं हुआ डुएल ट्रिगर हुआ मत बनाना मॉड। दक्ष उधर इंसो के में है तो मेरे को इधर दे। नहीं हो भाई, इनको हटा दिया मेरे को, इनको तुम हटा लोगों दिया को मेरे को। मॉड बनने में इतना क्या शौक होता है? क्या मिलेगा तुमको मॉड में? भगवान जाने। लोगों को बैन करना मिलता है, लोगों को बैन काहे करने मिलता है, बैन मजा करना आता है? है। बिना बात के आप आओ बैन इनको नहीं I'm करना। sorry. आपको बैन करता हूँ। Probably not something I should say as a knight. तू मेरे को बैन करेगा? I give you तू my मेरे को बैन apologies. करेगा? है हिम्मत? तेरे को दुनिया से बैन करवा दूंगी मैं। ज्यादा है मत हिम्मत? दुनिया से बैन करा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं चलेगा, मेरे को वैसे भी शांति चाहिए, मरूंगा तो हाँ। शांति मिलेगी। तो जा ना मर, तुझे जिंदा रहने को कौन बोले? हिम्मत है तो आया कैन। क्या हो रहा है? अबे डुएल एक्सेप्ट नहीं हुआ क्या? मेरा भी नहीं हो रहा है। क्लच अच्छा मॉड है, वो जो है वाला था उसको मॉड मत बनाना कभी। मैं अच्छा मॉड नहीं हूँ, मैं बता दूं, मैं बस मॉड हूँ। मादर ये अब मैं जीतता क्यों नहीं? मेरे को ये तो बता, डुअल सोमोदीप हराता है मेरे को। पता नहीं। मैं पहली बार जीता हूँ डुअल, ठीक है ना? वो ज्यादा शर्म वाली बात है मेरे से, बताओ। सोमोदीप से मैं जीतता ही नहीं हूँ। उसके स्ट्रीम में तो मैं ही जीतती रहती हूँ हमेशा। पता नहीं डुएल, पता नहीं उसका स्ट्रीम में पता क्या ही कर रहा है। अच्छा उसका स्ट्रीमर लग सिर्फ मेरे साथ है। अरे स्ट्रीमर लक नहीं, स्ट्रीमर नहीं, स्ट्रीम लैब गंदी नजर है। अरे ये फ्लक्स जीएफएक्स वाला कौन है बे? वो आदमी जिसको ना जीएफएक्स का काम आता है ना, छोड़ो ना, जिसके नाम पे आफ्टर इफेक्ट भी लगा हुआ है। समझ गया। 1760 1760 हाँ। सुप्रीमेसी भाई। सुप्रीमेसी भाई मेरे को मॉड बना दो यार, वो एक मेरी आइडेंटिटी थी इधर। नहीं है बे, मत बनो बे, क्या करोगे? टाइम पास। I already finished our conquest. अरे 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 हटाओ, कौन है रे? हटाओ, एक्सेप्ट करो। शॉर्ट बॉय कर दिया, शॉर्ट बॉय कर दिया नहीं लिया क्या? अबे मेरा एक्सेप्ट हो नहीं रहा। स्ट्रीम लैब्स को लड़कों का एक्सेप्ट नहीं करना होता। क्या मतलब? ये चीज मैं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। सॉरी चलो आ जाओ मूडी खाने की। भेज तो बेच चुकी है 5000 पॉइंट्स के लिए। उतने होंगे मेरे पास? 5 पॉइंट भी नहीं होंगे। एक्सक्लेमेशन कैंसिल। वो बैठेगा, पढ़ना वढ़ना नहीं होता उससे, रहने दो। बैठ के पकड़ेगा।
अरे यार अकमल संडे इतना लेजी फील होता है ना, आपके संडे पास को कुछ काम 300 करने का मन नहीं पॉइंट्स है, करता। व्हाट द हेल। साले 4700 दे। ठीक है 300 सॉरी 200 200 280 281 281 एक्चुअली। गलत है भाई ये तो। डुअल शॉट बॉय 5000 भाई लव यू 3000 यार आ जाओ 300 लव यू 3000 जीत गया भाई, जीत गया। भाई तू भी अभी कॉपीराइट आ लाइव जाए। कर ले, रात को आने की भाई जरूरत पूरे नहीं। कई को रात को मत आ। चलो भाई मैं जा रहा, मैं पढ़ाई करूंगा अब एक्चुअली। गाली पढ़ने के बाद ही याद आई अकमल को, अरे पढ़ाई क्या होता है। अरे नहीं, मैं वो खाना खा रहा था तो इसीलिए मैं आया था। खाना खाते टाइम मैं बात कर लेता, मैं बहुत देर से खाना खा अच्छा कितने देर से खाना खा रहे हो उसी टाइप से तू? खाना खाते 10 खाते घंटे भाई। गाली मेरा सुनने का खाना मजा है। खत्म हो गया है, मेरा खाना खत्म हो गया है। मैं आधे घंटे पहले खाना खाना खा रहा था। 10 घंटे से खाना खा रहा खाना खाते खाते उसको गाली खाने में मजा आता है। है। मसाला ऊपर से मिल जैसे जाता है। जैसे शॉर्ट में खाना खाने के बाद हाजमोला वही खाया ना। था ना, ये गाली खाता है। आपको कॉलेज हुआ? वेरी फनी। चलिए यार, बाय। लॉन्ग। चल भाई बाय 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 निकल। बाय। But because the dragon, Storm Terror, has been around, What when the did you storms hit, we usually end नॉल up with भाई। at least a ओ few ये injuries. तो The मटी Knights खेलता of है। Favonius have been kind of doing the best they can शॉर्ट to में अपने defend the आईडी area. पासवर्ड दे तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। So these annoying creatures चलिए have been आएगा। getting closer and closer क्या? to the city? Exactly. That said, clearing this camp Okay, helps कर make बे the एक्सेप्ट area कर। a little bit safer. Come with me. A responsible knight must make sure to पता see है, you to the सही city है। safely. बाय बाय। कितनी है जोनी? ला 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 ला। रियाज विन है भाई, इस बार मैं हार गया भाई। আজি ইমান এলাই লৈছে কাম চাম কৰিব। কাকো सपोर्ट हुआ से सब सही। भाई हरामी है, हर एक लड़की को जिताता है किसी की भी स्ट्रीम में। स्ट्रीमलेस भी थरकी है। आपकी तरह। हैं। हाँ ठीक है, हम थरकी है। आओ तुमसे थरक पूरा करेंगे हम। आओ। पीडीएफ है यार ये भी बताओ। वो भाई क्लच शॉट की ओ किस्मत सॉरी, चमक दक्ष रही तो बच्चा था, हम भूल गए। अरे बच्चे, सॉरी है। अरे क्लच शॉट की किस्मत चमक रही है भाई आज। क्या हुआ? बच्चा क्या हुआ हो तो गया? क्या हुआ? क्या फर्क अरे पड़ता है? ना 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 मादर मैं छोड़ो अबे भाई, ले हुआ लिया क्या? अरे भाई मूडा अवार्ड में क्या मजे आया भाई शॉट। अरे अकमल है क्या गायब हो गया, भग भेज उसकी गांड जलाता मैं अभी। उसको क्या कोई मिल गया? कार्ड मिला होगा, कोई कार्ड क्या मिला मिला होगा। तेरे को? सिएस्टा मिली है मेरे को। कौन है सिएस्टा? अरे यार होगी कोई। हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर वाला कार्ड मेरा भाई हाँ यार। दिखा 238। अकमल की माँ की कसम, क्या रात क्या वाला टाइम पे गया अकमल। आपको तो पता होगा, पता होगा। मेरे को तो नहीं पता। मॉन्स्टर में एंट्री हो चुकी है हमारी। 4 लेवल भाई हमारा। भाई यार रुको तो मैं आता दूसरे अकाउंट से भी करके। ये भाई शॉर्ट बॉय की तीसरी एंट्री है चैट में। अब तो शॉर्ट बॉय जानते होगा कि मॉन्स्टर में क्या होता है। Let me officially introduce the city of wind, सही बात है। dandelions, and freedom. अब वो लोगों को बताता है कि ये क्वेस्ट करके देना है तुम। Welcome to Mondstadt. Finally, no more having to camp outdoors. But the city folk don't look too cheery. मूदा अबाउट किधर है यार Everyone's इनसो। been put out of place by Storm अरे Terror. दब जाओ भाई, क्या खराब हो But गया। everything will turn out fine as long as Jean's with us. डुअल करने के लिए पॉइंट्स है मेरे पास। Acting देखो भाई as the स्ट्रीमर master of the Knights of Favonius. Jean, defender of Mondstadt. और वो ना मियो सासाकी करके एक है, वो मतलब उतनी पसंद नहीं मेरे को, लेकिन वो भी डिमांड में है। नोप नहीं जानता।
वर्क Before बटर I कप take you नाम है guys वाओ। to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, traveler. It's a reward for helping me clear out that जो Hilichurl camp. बिदार क्रूसेडर। कौन ऐड किया शॉर्ट को मेल बटर Because this भाई reward is useless to मिल you, रही है भाई Paimon. बंदे को पॉइंट्स नहीं थे मेरे I'll पास treat you to a चैलेंज traditional एक्सेप्ट करने के Mondstadt लिए, मैंने delicacy. पॉइंट्स ऐड कर लिए। Sticky honey आओ roast. डुअल करते हैं। ये क्या है ये? Come with me. We'll head ऊपर to फिर the दूसरी वाली ले prettiest लेंगे वही अच्छी है। ground. एक्सक्लेमेशन कैंसिल मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, कैंसिल कर दिया। वही क्या सेकंड हां सेकंड वाली तो अच्छी है वही तो ले और क्या ये लिया अब मैं। क्या होगा? कैंसिल एक्सेप्ट एक साथ आ गया। अबे हो नहीं रहा है। अच्छा आगे सो टाइम हो गया 15 सेकंड के अंदर तेरे को क्लेम करना रहता है। आराम साधो। तो अब क्या करूं? डुअल ऑल और तो अभी नहीं कर सकता क्लेम छोड़ दे। वो तेरा वाला क्लेम रिजल्ट आ बाकी है गया, पर वो वाला रिजल्ट आ गया देख लो। आज वापस करना। बाकी मेरा क्लेम बाकी है ना? ठीक है मैं अपना ऊपर वाले से क्लेम कर लेता हूँ। $TU नहीं वो 15 सेकंड का रहता है भाई रे 15 सेकंड के अंदर क्लेम करना रहता है भाई। This used to be a यार bustling street, but with so many storm terror attacks क्या करूं this मैं year, क्या the करूं? usual crowds are nowhere to be डॉलर seen. टी डाल के जितना Except for the local tavern near the city डॉलर wall क्या? over there. They haven't been affected. डॉलर If TU anything, their business is better than ever. TU हाँ ठीक है कोई नहीं भाई होता है। शॉर्ट बॉय गरीब हो गया था क्या? इसको ऐड किया क्या शॉर्ट बॉय? हाँ की कसम क्या है भाई? कितने खराब ऐड करके रखा है। उतने भी ज्यादा नहीं है, एक बार तो मैंने कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी। उतने भी ज्यादा बिल्कुल ज्यादा नहीं है। बस शॉर्ट बॉय के बच्चे भी इसी से रिडीम करेंगे, अब जरूरत ही नहीं उनको। होम डिलीवरी ये क्या भाई? ये क्या बात होती है होम डिलीवरी? क्या रे क्या मिला तेरे को? अल्लाह किधर है? अरे दक्ष तू किया है कि नहीं अपना मुदा बॉट आज? मैं पहले ही कर लिया। कोई आओ बे, कोई नहीं किया हो तो वो आ जाओ प्लीज, हमको एक कार्ड दे दो अच्छा वाला। एक्सक्लेमेशन गैम्बल So, ऑल the present I want to give you is लॉस भाई a हार wind glider. 50,000 का मैंने लिमिट लगा के रखा था गैम्बल पे, And the people हार of गई थी Mondstadt love using them too. I brought you हार here to नहीं give था it to भाई। you, so you can experience it right away. जुआड़ी के साथ खेल रहे तो गैम्बल में तो You're हारोगे। really excited about these wind gliders, huh? Well, that's because the wind is the heart and soul of Mondstadt. तुम्हारी साला अभी भी जा रही क्या वैसे डिस्कॉर्ड की आवाज? Let's जा give रही it है। a whirl. बंद कर It's देना। easy to use, but you still need to pay मुझे तो attention थोड़ा to my पॉइंट दे दो। instructions. ठीक नहीं है, मिलेगा। दे देता हूँ थोड़ा, क्या दिक्कत है। मजदूरी करो उसके लिए पॉइंट। 10 to 20 lakhs भाई साहब, कोई ना। 10 से 20 लाख 50,000 40 बार में हार जाएगी पूरा, क्या मतलब? मैं चाहूंगा तो सच में हार जाना है लोगों को। अरे एक तो साला नाम भी ऐसा वो है ना, मूडी एक्स खाने की। भेजेगा कैसे कोई डुएल? बंदा पूरा मूड में है। पहले दूसरा था रे, पहले AMVX खाने की था, लेकिन उसके बाद AMV छोड़ दिया तो मूड ही आ गया मैं। अब जब मूड करता है तब एडिट करता हूँ। सेंस तो बनाता है कम से कम। नहीं बनाता सेंस भाई शॉर्ट बॉय से तो ज्यादा बनाता है। वो भी है। हाँ सालो मेरे खिलाफ तो हर चीज सेंस बनाएगी ना तुम, तेरे लिए। शॉर्ट बॉय का रीजन क्या था तेरा? अरे शॉर्ट नया लॉन्च हुआ था यूट्यूब का, तो मैं सोचा चलो शॉर्ट बॉय ही रख लेते हैं। ये है ना तेरा रीजन? कैसे कैसे का भाई? तूने कहा था, तूने कहा तो था। ये कहा और मैंने सुन लिया। अनेबल टू फाइंड रिया। भाई वो इमोजीज लगे हैं ना @पूछ, उससे वही कर सकते हैं, वो और कुछ नहीं।
अनेबल टू फाइंड रिया भाई। क्या बोलते कंपनी बंटा है सब चल पड़े। एमी में सॉरी। The sky. शॉर्ट में से पूछो रिया को किधर बंद करके रखा है। नहीं वो इमोजी लगे हैं ना, वो टाई जो लगे हैं उस पे। टाई नहीं है वो, रिबन से जो भी है भाई। भगवान जाने क्या बता, हो भी सकता है, दो टाइम लड़कियों का टाइम कुछ भी हो सकता है। अरे सानू लाग आया ना उसके पैर में मत चोरी कर जाए। इनको अरे मिस इन्फॉर्मेशन बात कर चैट में करना है, इसमें बुला दिया। आना 2 मिनट कुछ करते हैं। अरे चैट ही नहीं पढ़ता यार वो, चैट ही नहीं मेरा पढ़ता है। चल गया मॉडल का चैट ही नहीं पढ़ रहा है लौंडा। अबे तुम मिस इन्फॉर्मेशन बांट रहा है उल्टा कि भाई C0 पे फारजन चला लो, ये चला लो। उसका मैं लिख भी रहा हूँ कि भाई नहीं चलती ये वो, पढ़ ही नहीं रहा चैट, किस मार दिया। क्या लिखो क्या, लेकिन लिखो भाई, चैट पढ़ लिया करो भाई। बग बग उसको लिख क्लट शॉट वाइटी नाम का बंदा चूतिया है। ये लिख। एक सेकंड पहले तो मुझे दक्ष याद है। एक बार अगर याद हुआ तो मैं फिर मारेंगे ना तो। मेरे को कुछ नहीं, मैं उसका स्ट्रीम देखता भी नहीं हूं। नहीं ना देखने से क्या होता है, मैं तो जोक मारूंगा ही ना। मारूंगा जोक, मैं तो बोला मार पहले जोक, मेरे को कुछ नहीं। नहीं तेरे को होता भी तो मैं थोड़ी ना रुकता। मार तो रुक, कोई नहीं बोला रुक। कल से 2 दिन हुआ, सुबह वॉक पे जाता हूँ, ग्रास करके आता हूँ भाई। ये सही है भाई। 2 दिन हुआ है भाई, देखो 2 दिन में आदमी फ्लेक्स कर रहा है। You've actually got the power to go up against the dragon. Are you a new ally? भाई गेम में ये सब सेंस मत ढूंढो भाई, फारूजान वाली सी सेंस ढूंढो आप। Traveler, you've come at the right time. नहीं याद है दक्ष। Hold on, Amber. Are you perhaps forgetting to introduce us? Oh, right. This is Kaya, our cavalry captain. These two are travelers from afar. अरे शॉर्ट पर बाइक पहले Far. Is that all we know of them? अरे शॉर्ट पर आवाज नहीं आ रही क्या? उधर वाले वीसी पे आना। हां उधर वाले वीसी पे आओ। कौन सा वाला? I see. अरे मेरा ला। Welcome to Monster. क्या हो गया? Though you haven't arrived at the ध्यान best चुप of times, I'm afraid. एक सेकंड रुक जा, क्या हो गया? I understand the anguish of being कुछ नहीं, मैं बुला separated रहा from family. है। I'm not really sure why you're looking for the animal god. But everyone has their तो secrets. है कहाँ वो, खुद तो बैठा नहीं है। Relax. I won't press you for more. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help. तो हर जगह है भाई। हेलो डीजीरा का सुसाइड बॉयज। क्या हुआ, बोलेगा? अरे भाग गए। हेलो अगर दक्ष, कोई दक्ष मेरा जंप कर इनको बुला रहा जनरल में अपने सारी गेमिंग में। The acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you. अरे पागोरे, मैं तो पहले से बैठा हूँ, चल का क्या मतलब? ऐसी तैसी कर दी गाड़ी खींच मारी पीट 220 पार है। बंदा 2-2 वीसी में बैठता है भाई। हाँ तो भाई हम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे। क्या हुआ, कुछ बोलोगे? बोलो भैया, ध्यान से भैया बोलो। क्या बोलना? अरे
क्या रे कैसे बोल रही रे क्या हिंदी बोल तेरी बहन की है खेल लो ठीक है यही खेल लो ब्रो आप न्यू हो? हाँ भाई जस्ट बॉर्न हुआ मैं हाँ हाँ कैसा लगा केन? शॉर्ट बॉय बस उतना ही नहीं है जितनी मेरे दादाजी की एफडी परसों ही तोड़वा के आए। परसों एफडी तोड़वा दी भाई। वो भी दादाजी से पढ़ के कल तोड़ेंगे। दादाजी को पहले ही चल बसे एफडी ओ दादाजी को पहले दादाजी को तोड़ा और फिर उसके बाद एफडी तोड़ी। भाई दादाजी को तोड़ा का क्या मतलब होता है भाई ऐसे तू मेरे को गलत साबित कर देगा मैं गलत नहीं मैं विलन बना देगा भाई शॉर्ट बॉय मेरे को दादाजी को नहीं तोड़ा अच्छा तू हीरो कब था? लाइव चल रहा है क्या? यस दादाजी को डुबा के मारा था हाँ लाइव चल भी रहा है, लाइव का साउंड जा भी रहा है और ये सारी बातें क्या क्या बात कर रहे हो? वही बात कर रहे हैं क्या क्या बात कर रहे हो वही तो यार दादाजी को मत तोड़वा रहा है मेरे से बताओ मैं इतना अच्छा आदमी हूँ नहाते नहाते चल बसे हमारे दादाजी वो अलग बात है उसने समय रहना बन रहे लोग। हमारे भी दादाजी हमारे सपने में आएंगे अब से And once it was over, I brought them straight here. स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है हम लोगों को। अरे मैं बोल रहा था क्या हो गया इनसे एकदम ऐसे बुलाया अरे ध्यानशु भाई बुला रहे आ जाओ अरे मैं इसलिए बुलाया कि भाई शॉर्ट्स बॉय के सर्वर में सुनो 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 एक मिनट भाई शॉर्ट्स बॉय के सर्वर में ध्यानशु आएगा फिर शॉर्ट्स बॉय के पास बचेगा नहीं कोई सर्वर जहाँ जाके वो बैठ सके कह रहे मैंने सिर्फ इंसो को बुलाया ये पूरी मंडली लेके आ गया। भाई इंसो भाई अकेला नहीं जाता भाई अरे उस टाइम मैं उधर अकेले गया तो आकाश पीछे से आ गया तो मैंने कहा सर भी बता के चला तो उनको बोल ही देता हूँ कि भाई आ जाओ मैं यहाँ से उधर के आकाश पीछे से आ गया। आकाश गया कहाँ लेकिन पता नहीं। अच्छा मैंने एशिया सर्वर में मेरे सर्वर याद नहीं मैंने एशिया सर्वर में बनाया था ना। हाँ हाँ भाई वो एशिया तो सर्वर में अरे यूआईडी देख लो ना 8 से शुरू हो रही है। अच्छा हाँ यूआईडी 08 से शुरू 18 से शुरू हो रही है। हाँ तो 1 तो है ही 1 तो बढ़ाने के लिए लगाए हैं 1 का मतलब नहीं है भाई 1 का मतलब है 1 का मतलब है कि नया आईडी है नहीं 1 का मतलब है कि वो ऐसा का आईडी है इंडिया का नया आईडी अलग ही लॉजिक है मतलब ये है और एक नया आईडी बनाया मतलब ये है 1 का मतलब ये है कि इंडिया का नया आईडी भाई 1 का मतलब है ना लेकिन मतलब तो सभी चीज का है बे। अरे मतलब भी तो दुनिया बिना है मतलब के भी होते हैं रहने दो इस चीज पे बात करोगे तो बस छिड़ जाएगी। भाई हम लोग बहस नहीं करते भाई आकाश का कट गया बहस वो तो बहस होती है जिसमें कोई जीतता नहीं है। नहीं एक मिनट क्या बोला था फिर से बोलना सॉरी एक बार क्या बोला सुना ही नहीं दिया। मैंने बोला कुछ चीजें बिना मतलब की भी होती हैं उन पे बस नहीं करना चाहिए वरना फसड़ा मच जाएगी। कौन सी चीजें होती बिना मतलब से जैसे कि अभी बिना मतलब का तू मेरे से बात कर 7 रुपए दो मैं बहस नहीं कर रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ तेरे को मत पूछ भाई क्यों पूछ रहा है क्या करेगा जान के तू बता मेरे को तू क्या करेगा जान के। अभी तो बहस कर रहा है मेरे साथ। वाह भाई वाह देख रहा है केन देख रहा है तू आता हूँ मैं 2 मिनट अभी तो बहस कर रहा है मेरे से। अरे शांत हो जाओ भाई शांत हो जाओ कचरा मत करो उसको मैं कुछ बोल ही नहीं रहा मैं तो इज्जत से बात कर रहा हूँ और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं बहस कर रहा हूँ तो गलती शॉर्ट बॉय हाँ बोल शॉर्ट बॉय 10 पुल क्या 10 पुल 10 पुल क्या 10 पुल 10 पुल अबे बोल दे भाई चूतिया 10 पुल को क्या करेगा बत्ती बना के डाल लेगा क्या मारना 10 पुल 10 पुल ही तो बोल रहा हूँ मैं समझ में नहीं आ रही तेरी बात मेरे को। अरे भैया का भाई 10 पुल मिलते हैं भाई तेरे को पता है ना मेल में ओ मिलते हैं ओ भाई AR 60 लेवल भाई 59 सॉरी
अरे गॉड भैया आप यहाँ भी स्क्रीन शेयर भैया देखो भाई शुरू हो गया। गॉड बाद में आता है बस स्क्रीन शेयर पहले आता है मानो। इसको दुनियादारी से फर्क नहीं पड़ता, वो आके स्क्रीन पे करके खेलेगा जाएगा। अरे चाकू मार देगा किसी को। अच्छा छोड़ो आ जाओ मोबाइल लेजेंड देखो। अबे कहाँ 10 फुल मैं मिलते हैं मेले डाउनलोड में किया यार। ये अरे मिलते हैं यार। 8 GB का है भाई, मैं नहीं रख रहा। पहले ही फोन में मिलते 30 तो है। GB की अच्छा गेम लेवल थी, 7 या 8 एक अच्छा बार मिल चुका है आके ठीक है। स्टैंडर्ड बैनर पर करूँ? 10 पुल और बिगिनर उससे बैनर और पर? कौन से में। नहीं नहीं स्टैंडर्ड में बिगिनर नहीं चाहिए नोवेल वोवेल नहीं चाहिए। अरे इसके जैसा मतलब ये कॉपी कैट है पता है, लाइक कॉपी गेम है ये सन ऑफ गॉड। वो लीग ऑफ लेजेंड पता है, उसका कॉपी है हाँ ये मोबाइल लेजेंड। 4 स्टार आया, 4 अरे स्टार आया। मोबाइल लेजेंड चल हाँ गैस कर 4 स्टार में क्या आएगा शॉर्ट बॉय। 4 स्टार में मीका आएगा चल मीका आएगा। मे बी बारबरा आएगी नहीं तो सुक्रोज आएगी। मीका करते जा स्किप मेरे को भी देखने का है। क्या आया शॉर्ट बॉय। अभी तक नहीं आया। अबे तो कितना स्लो है 10 ही पुल तो मारा है। वेपन आया भाई। मीका अरे हट बहन की चाहे वेपन पवोनियस कोडेक्स दिया है भाई। ठीक है कोई नहीं हम सब हार गए। एक्सचेंज कर पुल एक्सचेंज कर। गैमलिंग एडिक्शन गाचा गाचा एडिक्शन वेपन की माँ की। हाँ यार कुछ नहीं कर ये ले सकते लूं छोड़ो। ये ले लूं। अरे अपना पिंक वाला ले पिंक वाला। अपना पिंक वाला क्या होता है भाई? अबे लेना बे साले बातें मत पकड़ना है तो आजा छोड़ दे अब। सिंगल पुल चास्का निकालूं? घंटा वेपन चैस का स्टैंडर्ड बनर पे। अब जाके उसको एक और बार वो कर क्या? शॉप से। अरे पेट जमा करके रख भाई। अरे एक और हो जाएगा ना एक्सचेंज वो बोल रहा हूँ शॉप से। पेट चैट देख के मत पढ़ चैट मत ये पढ़ नहीं मत कोई पढ़ ओरोरन चैट। क्यों नहीं मिलता? गुस्सा। किस्मत खराब है मेरे को 2 बार मिल गया भाई। 2 बार बैक टू मैंने बैक दूसरों के अकाउंट में निकाल लिया, खुद के अकाउंट में नहीं निकल रहा मेरा ओरोरन। मेरे को रहने चाहिए दो भी नहीं था रहने दो ओरोरन। निशी, आप छोड़ दो। क्या? जो चीज नहीं आ रही है ना उसके पीछे ज्यादा मत भागो वरना नहीं भाग रही बस हाँ? ना। एक डायलॉग है ना, विनाश कार्य विपरीत बुद्धि। 20 पुल कर ले अभी फिर भी नहीं आया। कोई ना सुक्रोज ही गारंटेड है क्या तेरा? हाँ अभी गारंटेड है। दिया निकली और पीटी कितने हो गए? पीटी कितने हो गए? नहीं अभी 10 पुल में हुआ गया दिया निकली। अभी भी तो कमेटी हारी है 10 पुल करके। अच्छा है ना तेरे पास, फिर पीटी बिल्डअप कर ले। बस शेर है वो। अभी तो और बाटा होना चाहिए तो पीटी बिल्डअप कर ले। हाँ वही। नहीं फिर फौरन मत पुल कर अब। नहीं मेरी किस्मत फिर पता नहीं हाँ सास मत का कर निकल पुल गई खत्म। इस मत करना मत। हाँ वो तो है, तो निकाल क्या रही है फिर? निवी निकाल रही ना? नहीं मोबिका बहुत टाइम है तेरे पास। हाथ सबको रोक के मरने रख, का चाहिए। हाथ रोक के रख। या मैं तो भी रोक के रखा है। मेरा मन करेगा तो जोंगली भी निकाल नो क्या मन मैं मत तो कर। निकाल रहा हूँ जोंगली, मैं तो जोंगली निकाल रहा हूँ। मैं भी निकाल रहा हूँ मैं भी नहीं तू तो निवी बस निकाल रहा लगे। है। हाँ मैं तो दोनों निकालूंगा ना। 2 अकाउंट है ना भाई। एक अकाउंट में न्यू भी अगर नेटलैंड पूरा एक्सप्लोर करा जाए तो कितना आएगा पुल? 35 पुल्स पूरा का हैं पूरा 0 से अच्छा 0 से हाँ? 35 पुल्स कम नहीं है थोड़ा। मेरे अंदाजे से मतलब कम पूरा अगर नेटलैंड 0 से एक्सप्लोर करोगे उतना ही दिया। 400 800 तो प्रिमोज तुमको एक्सप्लोरेशन से मिल जाएंगे करने से। और उसको मत बाकी काउंट कर तो भाई।
अबे टोक क्यों देता है? मैं बोलता रहता हूँ तो। उसको मत काउंट कर, उसको मत काउंट कर, बस बाकी और कुछ कर। तो वो भी तो मिलते हैं ना। अरे उस वो इवेंट है ना, अभी वेल उसको छोड़ना तू। कहीं पे वेल्किन जाके वो टाइम जीतने का लिमिटेड टाइम है, आ गया है। आपको थोड़ी मिलेगा वो, अभी जो करेगा उसको मिलेगा सिर्फ, बाद में फिर करेगा उसको नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हैं अभी निशी? भी मेरा वो कहीं नया पे जाके न्यू अकाउंट है वेल्किन ना, जीतने उसमें का 22 टाइम आ दिन एक चुका शो है। कर रहा है, वो 65 दिन शो कर रहा है। शॉर्ट बॉय, मेरे को ये चीज जानना है कि अगर सिर्फ चेस्ट मैं इसको खोले और जो बताऊंगा, ये कर ज्वाइन ट्री कर से नए मिलता नए है वो किए स्ट्रीमर तो के। कितना होगा पुल? वो बता अंदाजा लगा के देखो तो बताओ, अंदाज 50 लगा। 50 पुल्स तो होंगे कम से कम, मेरे को इतना लगता है। ठीक है। 10 पुल तो भाई तुम्हें मिलेंगे नेटवर्क के ट्री से, लेकिन वो अभी तक अप्लाई नहीं है तो छोड़ दो। 30 तक की खुला है अभी सिर्फ, 20 तक तो है। उससे ज्यादा मिलेंगे, 30 तक है अभी सिर्फ। अरे मैं तो 20 तक किया हूँ ना। You can use that console to open the door. 15 पुल मिलेगा भाई टोटल ट्री से और टोना से, ठीक है। ज्यादा टोना से। यो भाई सो यो ओमो निशी बोलो नेक्स्ट गिव अवे कब है तेरा? क्या कब है? नेक्स्ट गिव अवे कब है तेरा? गिव अवे मत कर भाई सोमो, गिव अवे मत कर यार, स्क्रिप्टेड रखियो। पूछ रही हूँ मैं, नेक्स्ट कब है? ओवरकिल तो ओके दियो। गिव अवे मत करो, हाँ, वैसे ही दे होगा यार, जब अर्जेंट में जरूरत है इसी को अभी गिव अवे की। अरे तूने मेरे बोला को था ना जीतना है। इसने बोला था हाँ दिसंबर में करने का। झूठ था भाई, वो पब्लिसिटी स्टंट था वो। बिल्कुल पब्लिसिटी क्लिक बेट कर दिया भाई, क्लिक बेट। क्लिक तो था, पेट क्लिक बेट कैसे करेगा वो, मुंह से बोल के कहता। हाँ तो मुंह से क्लिक बेट करा उसने। वर्बल क्लिकबेट क्या होता है बे? शॉर्ट बॉय देखो भाई, आर्चर बने बैठे हैं हमारे। शॉर्ट बॉय अब भाई मारने चटकी गले में घूम रहे द्वार से, नई राह पे निकले हैं, मतलब राह पुरानी है, नए सफर में निकले हैं भाई। शॉर्ट बॉय तो रिज होके बैठे हैं हमारे। रिया एक्स शॉट भाई यार, वो सबसे बेस्ट था भाई, आज के दिन का ना हाईलाइट है वो, रिया एक्स शॉट वाला। तूने भी तो वो डाला था क्लच एक शॉट, याद है? क्लच एक शॉट है, भूल गया भाई। कब क्या भूल गया तू क्या? बहन के लौड़े भूल कैसे गया, मेरे को पता ही नहीं है क्या है ये। क्या कह रहा भूल गए तुम बताते तो तुम्हें शॉट कर दिया। मैं नहीं जानता, मैं सच में। Well, good thing I prepared my secret weapon, explosive puppet berry bunny. बाप रे। सोमदीप क्या कर रहा है वैसे? क्या? सोमदीप का आवाज कम है, सॉरी। वो स्ट्रीम करने के लिए जा रहा है, उसका शेड्यूल सेटअप कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो बढ़ा लिया मैं। Well, one shot should be able to blow them up. कल फिर वॉच पार्टी कैसी लगी गाइस? आज दोबारा करेंगे। हाँ आज तो सीजन 2 चलेगा। आज निशी को भी बुला लो, मान जाओ, दो आ जाओ। एग्जाम है भाई, निशी ट्रॉमेटाइज हो जाएगी। चलो एग्जाम में आंसर की जगह वो कुछ करा देगी। हां आंसर की जगह भाई वही दिमाग में चलता रहेगा। नहीं निशी क्या, निशी कौन सा मैजिक स्पेल था? ऐसा है, बट निशी देख सकती है भाई, मस्त मस्त एनीमे था, वो सब बैठ के देख लेते थे। कौन सा वाला देख रहे थे ये बता? एनीमे था कि 28? अबे वही तो, कौन सा वाला देख रहे थे? एनीमे था। अबे कौन सा नाम होगा ना? मुसुके टेंसाई। मुसोकू 10 से तो फिर भी ज्यादा अच्छा है भाई। नाम बताते हैं, द टेस्टामेंट ऑफ सिस्टर न्यू डेविल। द टेस्टामेंट ऑफ
मस्त मस्त एनीमे ये एनीमे है रहा मैं हाँ हाँ मजा से क्या भाई सब है दोनों भाई को सब नाम है रखा याद है मेरे को भाई नाम भी याद नहीं याद है इनको तो ध्यान से पूरा भाई याद है मैजिक अरे मेरे को याद इनसो को कल मैजिक स्पेल से लेके कौन सी लड़की क्या कर रही थी, कौन सा लौंडा क्या कर रहा था, क्या मसल रहा था, सब याद है। हर एक का स्पेसिफिक अभी नाम याद है बच्चे को भाई। इतना डिटेल से देखा था तूने? हाँ इनसो नहीं नहीं फुल भाई ज्यादा कर रहे हैं। और बाद में मैं बता अभी देना देखो भाई चाहूंगा इनको एनीमे नहीं देखता। हाँ हाँ उसके अरे हिसाब मुझे से भी इनको को इतना सब पता है बताओ। अरे मेरे को 2 कैरेक्टर सबसे के ज्यादा नाम याद नहीं होते। थंडर का है भाई, अबे थंडर को डीएम करना था यार नाम। मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, मैं बता रहा हूँ तेरे को, कल रात को जब लेता ना वॉच चलो पार्टी तो ठीक है, चिक्स रे तुम ऑन कर लोग लेता बात अपने, करो, मैं जा रहा हूँ अब। अरे चिक्स रे कहाँ ऑन जा कर रहा है भाई? लेता ना अपने। शॉर्ट पे? हाँ जो है बंद कर रहा हूँ नेटवर्क यार। शांत रहो, नेटवर्क शांत रहो, शांत रहो। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोलना है शॉर्ट, जल्दी बोल। बोल रहा हूँ कि जा रहा हूँ, चलो ठीक है, तुम लोग बात करो। लाइव बंद कर रहा है, ठीक है ठीक हाँ है। बंद कर रहा हूँ, चल। चल ठीक है बाय। भाई 10 बजे सुबह से लाइव कर रहा हूँ यार। अच्छा 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 हाँ स्ट्रीम कर दे बंद, मेरा नेट खत्म होगा तेरे लाइव के चक्कर में। तुम लोगों सॉरी। के पास वाईफाई नहीं है? मेरे पास नहीं भाई। अभी कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ, मतलब सुबह से लाइव कर रहा था, मतलब थोड़ा दिमाग भारी भारी लगने लगा। कल करूंगा ना, कल करूंगा, खेलूंगा। धीरे ही धीरे करना पड़ेगा ना, एक साथ नहीं हो पाएगा इतना। एक बार में कितना करूंगा, धीरे धीरे हो पाएगा ही। अच्छा बंद कर रहे हो, ठीक है, कल मिलते हैं। कब आओगे? 10 बजे सुबह। मैं तो रात को भी 10 बजे। अगर नाइट की स्ट्रीम करता हूँ तो मैं 10 ही बजे करता हूँ, सुबह की करता हूँ तो भी 10 ही बजे करता हूँ, मतलब 10 बजे इन जनरल टाइम है मेरा, समझ जाओ आप। बाकी ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्या बोलूँ मैं, मेरे को तो एक्सपीरियंस नहीं लाइव करने का, लेकिन जो भी है, अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छी बात है। तो चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, कल फिर से मिलते हैं।